We are live. Hi Vani, how are you? Welcome to Chalchitra Talks. मैं आपको क्यों इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ ऐसा? Hi, Vaibhav. Thank you. It's my pleasure. क्या चल रहा है? Nothing. How are you? मेरे पड़ोस में some बूढ़े आंटी अंकल are celebrating their anniversary. So काफ़ी old हाँ, school songs चल रहे हैं. They are dancing. It's very cute. But नाइस. yeah. मैं दो चार चीज़ें बताना चाहता हूँ. आज नेविल शाह इज जॉइनिंग अस. नेविल के साथ हमारा आई थिंक 15 अगस्त के बाद पहला स्ट्रीम है. तो हील बी जॉइनिंग अस शॉर्टली. एंड बिफोर वी ब्रिंग हिम इन मेरे को दो चीज़ें बतानी है. एक तो मेरे को दो इंस्टा हैंडल रिकमेंड करने हैं जो मेरे को जीवन में Yeah. आजकल बहुत हेल्प कर रहे हैं. और मैं आज उसके बारे में ना एक आर्टिकल भी लिख रहा था, बट मैंने आधा लिख भी लिया था, बट मैंने कहा मैं आई थिंक बोलने में ज़्यादा इफेक्टिव रहता हूँ तो वो करूँगा. दूसरा, I got a super cool gift from my brother today. So can I show it? And like it's crazy. One Nice. second. Hi, guys. I think you'll have to bear with me for just a few more seconds. So basically, आपने ये लोगो देखा है Did you पहले do an कभी? unboxing video for Yeah, this? I did. I recorded. मैंने अर्पित को बुला के इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया. It's Oculus Quest 2. ये एक VR हेडसेट है. इसको ऐसे लगा लो. And then you go into that पूरा Black Mirror zone. It's very very cool. It's very very cool. I know people Nice. hate Zuckerberg and all. By the way, Zuckerberg owns this company, but बहुत cool है. Oculus Quest 2 बड़ी फन चीज़ लगी मेरे को. मैं अभी इतना डीप नहीं गया. अभी मैं बस इसके बटन्स वगैरह समझ रहा हूँ कैसे क्या चीज़ वर्क Yeah. होती है. आपको एक गार्डियन बाउंड्री बनानी होती है क्योंकि खेल रहे हो तो आपके लगने की चांसेस बढ़ सकती है क्योंकि आप मूव कर रहे होते हो और ये सब. बट मेरे को काफ़ी फन लगा ये. आई ऑल्सो मेड माई फादर प्ले इट. बट लाइक वही है कि अभी बस सीख ही रहे. उनसे गन नहीं उठाई जा रही थी तो मैंने कहा अरे नहीं ऐसे करो. तो वो बड़ा फील आया. So Nice. yeah, that happened. Now let's quickly move to these two Instagram handles. किसी को Oculus Quest 2 के बारे में कुछ पता है तो बताओ चैट में कौन सा गेम लेना चाहिए. कोई अच्छा गेम है तो प्लीज़ सजेस्ट करो. सारे गेम 20-20 30-30 डॉलर के हैं. मेरे को लगा फ्री होंगे तो मैं थोड़ा सा सैड हो गया था क्योंकि पीछे 6 गेम्स की फ़ोटो बनी हुई है तो मेरे को लगा वो तो फ्री होंगे ही. तो वो Yeah. एसोल डिज़ाइन वाली मेरे को फीलिंग आई. अगर तुम फोटो बना रहे हो अपने डब्बे पे तो इट बेटर बी फ्री नो. बट ऐसा हुआ Yeah. नहीं. Yeah, but there are these two very good selfish recommendations which I want to give guys. And इसके बाद हम नेवल को भी बुलाएंगे उनका ओपिनियन जानने इसके बारे में. वन इज इंस्टा हैंडल जिसके बारे में वानी को बता ही रहा हूँ. मैं पहले दूसरा बताता हूँ. ओके. तो बिकॉज आई थिंक शी ऑल्सो डजेंट नो अबाउट इट. सो द इंस्टा हैंडल इज कॉल्ड गुड बाइज. ओके, सो द यूजर नेम इज गुड बाइज. मैं मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को. Got it. शिट. या सो गुड बाइज का कॉन्सेप्ट पता है क्या है Hmm. यार? मैं थोड़ा सा ना हाँ. Oh, got it. गुड बाइज का कॉन्सेप्ट है. ओ शिट, व्हाई इज इट हियर? कैन यू सी इट? Yeah, yeah, yeah. सो गुड बाय इज बेसिकली जब भी कोई आपको किसी के साथ टफ कन्वर्सेशन करनी होती है और अगर आपको उसके लिए टेक्स्ट नहीं आता तो ये लिख के Mhm. दिखाते हैं. So hey Mo, I may have seemed that I resolved. I may have seemed resolved when we parted this morning, but the truth is, I need more time to heal. I have more baggage than I thought, and I need to fix that before dating seriously. I'm sorry for misleading you. So very very mature way of doing conversations, right? Like it like blew my mind. So parts where you struggle. Henry, it's best that we refrain from hugging one another at work. It's complicated enough. Like it's a proper ऐसी discussions है. I think she's the founder of this जो ये run करती हैं. So it's Yeah. really amazing. Hey Asha, even with no strings, I'm not in the right headspace to continue seeing you. Thank you for the care, attention, and the time you gave me. Very mature way of writing it. द नेक्स्ट हैंडल दैट आई, सो दिस इज गुड बाइज. ये मेरी काफ़ी सेल्फिश डिस्कवरीज है. तो मैं जल्दी बताना चाहता हूँ. तब तक लोग भी आ जाएंगे. द अदर वन इज कॉल्ड योर डायग्नोसेंस. ओके. सो इसके बारे में वानी को बताया हुआ है. ये
एक बंदा है हु इज अ, क्या बोलते हैं इसको, साइकोथेरेपिस्ट है समथिंग है, या Yeah. रिलेशनशिप एक्सपर्ट, एंड लाइक सो ये बेसिकली आपको बताता है कि किसी के साथ जब आप इन्वॉल्व होते हो तो व्हाट आर द थिंग्स विच मैटर, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। जैसे इसका एक कॉन्सेप्ट है, जैसे अभी डाला है इसने, मैंने अभी लाइक किया था 50 मिनट पहले, लूज इंटरेस्ट इन अनअवेलेबल पार्टनर्स। When it comes to an unavailable partner, don't analyze their text messages with friends, lose interest, become majorly turned off and move ASAP. This is a personal boundary. I do not like it when someone is unclear and unavailable. और ऐसे बहुत सारी इनकी पोस्ट्स होती हैं, बट सी इस जोन में बहुत लोग बना रहे हैं तो मेरे को तो पकड़ में आ जाता है जब किसी का ना ऑथेंटिक नहीं होता. But this is really authentic because I also like reading a lot about like all of this stuff. So this is like legit. There is nothing sexier than someone who can communicate, right? तो इसके में कि communication की कितनी need है. If the other person is playing games, you do not necessarily need to play games. Confusion, poor boundary setting, mixed signals, and unresponsiveness exasperates insecurity and disrupts intimacy. These are the red flags that sound an alarm, not to be ignored. This is about rational learning or a lack thereof. It's also about distance, avoidance, and self-protection. Communication is a responsive dynamic. Great post, guys. तो ये भी एक पेज है जो आपको देखना चाहिए. एक इसमें एक लाइन थी जो मेरे को पसंद आई थी. Just because your feelings are valid doesn't mean your behavior is. You know how a lot of people think ki if they are going through a tough phase so their behavior is valid, it doesn't necessarily mean so. तो मेरे को ये एक बहुत सही पेज लगा था, है ना. So these were two Insta handles जो मेरे को बड़ा मन था करने का recommend. That's so nice. Yeah. आप ऐसे You know देख, do you follow such pages? I followed them after you recommended them to me. What I've been following recently is food. A lot of food bloggers. Yeah. And all of a sudden I had this realization, oh, mental Yeah. health भी तो कुछ है. But then food is also important, right? Got it. But do follow these two pages, guys. ये आपको काफ़ी help करेंगे communicate करने में, better like करने में communication. And Yash is thanking us for this, all this info. Abhinav is saying ये VM Square stream है, but आज ये NVM stream क्यों नहीं है? Never mind. काफ़ी अच्छा है अभिनव. How are you? I'm seeing you after a long time. जल्दी से chats में बता दो guys कहाँ से join कर रहे हो. Next time Also like this stream, guys. like the stream Neville का हम reveal करने वाले हैं बहुत ही जल्द. And जल्दी से stream like कर दो जो 165 लोग अभी stream को देख रहे हैं. और जल्दी से बताओ आप कहाँ से देख रहे हो. We'll address that. But without further ado, or without much ado, I'm still confused the right way. We'll ask Neville. Let's invite Mr. Neville Shaw. Neville, please. Hello. नमस्ते. Hi. कैसे Neville? नमस्ते यार, तुम लोग क्या लोग हैं यार, इतना अच्छा बनने का जरूरत नहीं है. गाइस प्लीज लाइक स्ट्रीम, शर्म करो, दोस्तों का फोन बोरो करो, जाके लाइक करो. क्या कर रहे हो? मस्त इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक, तुम लोग को शर्म ही नहीं है. उसका बैकग्राउंड देख, 1996 विनैम्प का विजुअलाइजेशन चुराया उसने. क्या कर रहा है तुम लोग यार? But nobody will know Winamp. No, I just realized that the audience is going to be fucking like, what is Winamp? What is that, man? Hello. Yeah, बोलो. पहले से बताओ without further ado होता है या without much ado होता है? Further ado? Much It नहीं depends होता on है. all the, yeah. नहीं, how will it be much ado? It's much ado about nothing, which is a different Oh. play. Further ado. चलो अब से further ado ही बोला करेंगे. How have you been? क्या चल रहा है Neville? चल, आज मेरा पीठ दुख रहा है तो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं तो I don't know. I played football yesterday, so I was fucking, I don't know, at 41 I don't think I should have played football. I think that's the lesson I learned. तुम भी बच The first recommendation by Neville: don't play football at 41. ये part 3 की पहली recommendation. मत करो. Not worth it. हाँ, बोलो. How can I help? बस यार और हम भी है. तो मन था आपसे बात करने का. हम तो बहाना ढूंढ रहे थे कैसे. हाँ. Don't say all this. I was also surprised you messaged, but okay. बोलो. हाँ जी, तो क्या चल रहा है यार? एकदम से मूवीज बुक्स की बात नहीं करनी थी मेरे को तो. सीरियसली लाइक अपार्ट फ्रॉम मूवीज एंड बुक्स, लाइक आई नो आपकी पीठ दुख रही है, उसके अलावा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मोस्टली तो ऑफिस, थोड़ा बहुत स्टैंड अप और 2-3 पॉडकास्ट, इसी में निकल जाता है लाइफ. और क्या, Got it. खाना,
Got it. great food, Got making food, eating food, हाँ getting food. अब इधर उधर थोड़ा शॉपिंग, एक दो उबर का ड्राइव, कभी गाड़ी चला लिया, हाँ पेट्रोल भर लिया, फिर या रियलाइज किया कि वो शिट बहुत महंगा है पेट्रोल. यही चल रहा है लाइफ. आई रिमेम्बर भी कुछ टाइम पहले केवी के क्विज में एक बहुत ही कोई मतलब मस्त सा एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सा फिनाले या कोई हो रहा था जिसमें आपने वो पिकाचू को एक रेफरेंस दिया था लाइक दिस इज लाइक पिकाचू तो अरे मेरे को इतने लोगों ने बताया डूड नेविल ने वहाँ बोला और हम सब इतने खुश हो गए Dude, that's the worst. That is not something to be proud of. That Pikachu is such a horrible. मेरे को हिंडोल सपने में आता है कभी कभी. Sorry, नाइटमेयर में आता है कभी. Pikachu, oh God. एक तो वो शब्द ही नहीं है मेरे. Like it's not in my vocabulary. So like it's so difficult for me to reach to that word. I spend more time going, what's the fucking word? And then बट लाइक ऑन एंड ऑफ देखते रहते हो आप चलचित्र हाँ थोड़ा बहुत तो. The other thing is that like I'm not a YouTube slash Instagram slash whatever consumer. ऐसा I'm at the age of like at some point I just थोड़ा बहुत देख लेता हूँ here and there, but it's not I'm not like all the time on any of this. Like a lot of people like tell me, have you seen this blogger, this vlogger, this sketch, this no, sorry. गॉट इट तो पहले थोड़ी सी लड़ाइयाँ करते हैं क्योंकि हमने आप ही से ट्रिक्स सीखी हैं ये मेरे को सुनने में आया नेविल ने एक शो है जो शायद मेरा सबसे पसंदीदा शो है इस टाइम पे नेविल ने अभी तीसरी बार देखने की कोशिश की अब शायद देख पा रहे इससे 2 बार पहले वो देख ही नहीं पाए थे और शायद चैट में लोगों ने सुना हो जो अभी 210 लोग देख रहे हैं सक्सेशन करके एक शो है जिसकी पता नहीं मतलब मोस्ट यूज्ड वर्ड कीवर्ड बाय मी ऑन द चैनल and that's a show which Neville quote unquote like did not like when he was first watching it but Yeah, so I tried watching it a couple of times, and I also watched it because a lot of my friends and a lot of people who I sort of respect, like, etc., whose tastes I sort of like. I started watching it, and I don't know. I don't know. I just couldn't get myself to watch it. I tried watching it, and then the first time I watched it, I was like, but the pilot is just such a complicated, like it really, it's filled with like expositions of character, of scene, of drama, of all of that, and it just seems like they've put in so much work to be able to make that seem effortless, right? And when I was watching, then the characters are very unlikable, right? And because the characters are very unlikable, in that first episode you don't fall for any character, right? I mean, if you compare, another show that I had a similar problem with was Entourage. Okay, so when I first started watching Entourage, the first 8 episodes of, for the first 7 episodes of the first season, right, I couldn't get into. Only I would watch 3 episodes, 4 episodes, and I'm like, ये लोग सिर्फ लड़कियां ताड़ रहे हैं, सिर्फ it's just nudity, it's just गाली, कुछ है ही नहीं. Where is the conflict, where is the drama? ये वो. Once then my friend just said, just do one favor, finish the first season for me. I said okay. तो मैंने पहला सीजन देखा, and then fully hooked. Even in that show, Ari Gold is a very dislikable character, right? Until the penultimate season, till 7 and 8, he's a very but you want to be Ari Gold, you fall for Ari Gold, वो show में और कुछ नहीं बनने का, तेरे को सिर्फ Ari Gold बनने का, right? So there was a way to sort of get into that show. With Succession, then I watched it the second time. When I watched it the second time, I made it to the second episode because I knew that the themes of the first episode. So I was like, it's easier to watch the second time. And I watched it the second time. A lot of people were like, dude, how can you say you like Wire, you like Sopranos, you like Breaking Bad, and you like Aaron Sorkin so much, but not like Succession, right? And first, let's take away the Aaron Sorkin part from it. The dialogue is not rhythmical.
So it's not Sorkin. Yeah. Right? Also, the Sorkin drama is it's classical writing in the sense that there is one main plot and several subplots, right? In most of his drama, right? There's one structure which has the classic conflict of character wants something and then characters, there's something stopping the person from getting in it, and then there are these little review-lets that sort of come out of it. So so you are sort of engaged. So it's not like a Sorkin thing at all. It is more Sopranos, it is more Breaking Bad, it is more in that universe. It's not even as much Breaking Bad as much as it is, say, The Wire or Sopranos, in terms of the exhaustion with which you have to get into the show. There's a lot of commitment required. So but 5 or 6 episodes in, I really like the show. I'm still not invested because I don't have a character I'm in love with yet. And I don't know if that will happen for 4 seasons. I know everybody is like, Kendrick, hai na uska naam? Kendall, huh? So I know everybody is going to be like Kendall. But it's the, oh God, I can't believe I'm saying this. It's the Joker problem, right? The Joker in Dark Knight, right? It was written for an Oscar. It's like Gabbar in Sholay. Like if you are playing a character in that movie, you are going to play that character because the character is written with that much thing. Like, and I think I've spoken about this with you guys only before. Like in Dark Knight, the person who I fell in love with was Gary Oldman, right? Commissioner Gordon, right? Because there is a nuance to that performance that, I mean, if you've watched the series of Batman films, there is, what Gary Oldman brings to the character is unbelievable, right? To me, the Joker is extremely well done. There is no doubt in my mind that he performed the hell out of it, and he did extensive research and he did all of these things. But I still think that the character was, on paper only, it had a head start. Like like just when you read it, you're like, bro, ये आदमी तो सिर्फ villain है यार, इसमें तो कोई shades ही नहीं है. So like you're like, this is fucking outstanding. So of course it's thing, but I think what Gary Oldman brought to the character and brought to Commissioner Gordon, I sort of like. With Succession, I'm just hoping that I start to feel something for a character, like whether it's empathy, whether it's hate, whether it's thing. It's a very selfish world and everyone's trying to cut everybody and everybody's looking out for their own interests. And while that reality holds true, I don't think that and Tanmay gave me a great perspective on one of our podcasts, that look at it with the information that it is a क्या नाम है उसका, अरे यार वो मीडिया मुगल कौन है यार, Rupert Murdoch. So just look at it from the lens of a Rupert Murdoch story, and it will sort of give you a little more context. And then it started to feel like things. So I mean, to me, I see the potential of the show and like think, but it's just really, really difficult for me to sort of get into and binge and नहीं, बट आप टाइम लेके देखो. माय ओनली थिंग इज, इस पे आपका कहीं ना कहीं वो बायस तो नहीं आ रहा कि सिंस यू लाइक सॉर्किन सो मच, और इसमें लाइक ए रिदमिक सॉर्किनिश राइटिंग है, राइट? इट इज ऑल्सो जस्ट डायलॉग बट ए रिदमिक डायलॉग. लाइक इतने ज्यादा है, बात करनी नहीं आती, पैसा इतना है, लाइक इससे कोई रिदम नहीं है. बट वहाँ आपको नहीं लगता कि आपका बायस भी आ सकता है, बिकॉज यू लाइक एरन सॉर्किन सो मच कि अगर कोई कन्वर्सेशंस के साथ कुछ खेलने की कोशिश करता है तो आप उसको इंसल्ट के जैसे भी ले सकते हो. That's not true. I mean, Sorkin ka being the Ricardos, I read the screenplay. I was in love with the screenplay. The film is absolute shit. Okay. It's terrible. Got it. The screenplay is great, but the film is absolute, like it's atrocious. The way he's directed it, it didn't do anything for me, right? But I'll give you another example of somebody who plays with dialogue, but I really like from a rom-com space. You look at Nora Ephron, you look at Nancy Myers. They do great dialogue work, and I'm still in love with them. It's not rhythmical, it's not
any of that, and I'm giving you a completely different genre. Yeah, I'm not yeah. even trying to stay in the same space for that particular reason, right? But I तो sort of really like that kind of stuff. बट यही है कि मैं यही बोलूंगा कि बस आप देखते रहो. आई एम नॉट लाइक कि बेंच करो या जो भी है. हफ्ते का एक देख रहे हो, 2 हफ्ते का एक एपिसोड देख रहे हो, एंड लेट्स जस्ट कीप वॉचिंग इट. दैट्स ऑल लाइक आई वांट कि आप एंड तक जी सर, देख पहुंच लूंगा, जाओ. पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पहुंच जाऊंगा, क्योंकि no tension. है यार, मतलब थोड़ा मैं मैसेज भी कर दूंगा. when my mind is blown I will message you saying, हाँ. bro फट गई मेरी आज, bro great episode. I have no problem. I love it when a show surprises me. Yeah. I love it when something comes out of whack and sort of surprises me. Yeah. और ये होता है कि आपके साथ लाइक सक्सेशन तो एक बात हो गई, बट लाइक एक टाइम जैसा भी सक्सेशन का बस था, उसके बस के बाद देख रहे हो, एंड मे बी यू आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड द ग्रूव कि मेरे को उस लेवल पे हिट करे. बट हैज देयर बीन समथिंग विच यू कॉट अप आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, ओनली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, मैं कोई बहुत पुरानी पिक्चर की बात नहीं कर रहा, एंड इट्स स्टिल लाइक यू आर लाइक ओके आई गेट द हाइप. रिसेंटली कुछ आपने ऐसा देखा हो कि यार मैंने उस टाइम तो नहीं देख पाया, बट नाउ दैट आई हैव सीन इट आई गेट द हाइप. जैसे इफ आई मे से यू आर नॉट गेटिंग द हाइप विद सक्सेशन, राइट? Yeah, but I don't watch stuff for the hype. I watch shows Huh. that aren't. I mean, no. I'm saying I even watch shows that people completely dislike. Yeah, I totally get that. But I still will like, and I'm people are like, yeah, क्या गंदा शो है. मैं तो दिखता है, अगर मेरे को मजा आएगा तो Yeah. thing. So I don't know. I like it. I mean, the only thing is, I'm a fan for anybody who writes. Like, I love the Joker's character. The only problem I have, like, with it, and I get a lot of hate for saying this because people are like, "Arey, what? How can you criticize that joke?" अरे मैं criticize नहीं कर रहा है, bro. मेरे को बहुत पसंद है. Point समझो ना कि उसको तुमने हेड स्टार्ट दे दिया है, पेपर पे ही हेड स्टार्ट दे दिया. गैरी गोल्डमैन तो एक बेचारा कमिश्नर गॉर्डन का रोल प्ले करके उसका पूरा लाइफ वो ऐसा कावर्डिस रोल ही था उसका, बट ही टेकन दैट कैरेक्टर, एडेड लेयर्स टू इट एंड मेड इट समथिंग एल्स. So yeah. Are you excited about the new Batman movie? Nah. Why? I don't like superhero universe only. मेरे को कुछ ये सब पसंद ही नहीं है. It's just I think it's an age thing. I don't think it's anything. Because I mean that whole like Avengers series also, like the 10 years of the Marvel universe, 4 पिक्चर अच्छा था पूरा 10 साल में. 4 Vani lado, Vani lado. 4 पिक्चर. Vani fight. She's a big. अरे no, Vaani and me तो will have a huge fight on Harry Potter also. I'm not a Harry Potter fan. I've read all Also the not books. a Harry I've seen. Potter fan. Thank God. Vaibhav loves Harry Yeah, Potter. I love Harry Potter. So I'm not a Harry Potter fan because I think that the magic system is broken. Like, I don't think that the magic system has the depth that it should. And I know everybody's like, oh, but you should read it. Of course you should read it. And it got like some millions of people to want to read and all. Great, amazing, all of that. But भाई क्या ये लेकिन बड़ी बात बोली आपने, कैसे मैजिक सिस्टम, क्या दिक्कत है विंगार्डियम लेवियोसा के साथ आपको? I'll try and give you a very superficial example. Okay, because I haven't had this Harry Potter argument in a very long time, so I don't think. But I'll try and give you a very I'll try and give you a fairly superficial example. Okay, let's just say that Harry, Hermione, Ron constantly break the rules. Even in school, you're not allowed to use magic for certain things, but हम लोग फिर भी use करेगा. The magic is what they are taught plus little bit. Hermione is a genius. She's 2 levels above her in using magic, etc. etc. ठीक है. अभी ये सब के बाद भी अगर आप देखो कोई तो एक I think there was that Harry Potter reunion or something. उसमें एक सीन था. उधर ही मैं चिढ़ गया था वापस. because मैं बोला ये देख बहन, and I didn't think of it then, right? अब आप वो रॉन वीजली का एक क्या है वो प्रॉम का कुछ तो एक कपड़ा आता है उसका, जो उसका पुश्तैनी जायदाद है उसका. ठीक है. अब ये लोग सबका कपड़ा बदल सकता है, अवतार बदल सकता है, ये सब कर सकता है, तो जो कपड़ा नहीं बदल सकता है. ये वही वाली बात कि हैरी पॉटर के चश्मे क्यों है? इतना ही है तो चश्मे तो होने ही नहीं चाहिए. नहीं आई एम सेइंग नो आई एम नॉट मेरा रेली स्प्रे आ गया गाइस, एक सेकंड. गाइस थोड़ा बताओ लाइक हम ये आर्गुमेंट को कैसे फाइट करें. और I think
like more of कुछ लोगों के लिए it's very nostalgia वाला चीज. नहीं नहीं, it's Like not just nostalgia. मैं भी पानी लेके आया. We'll leave you alone with the chat, वानी. ठीक है? great. Everyone has decided to leave me alone. Yeah. Cool. Hi guys, what's up? Um, nice. Okay. Well, Guys, this मैं is इधर ही हूँ हाँ. Don't. अरे what? Vaibhav is gone. What a guy. Why is he gone? What has come? I'm here. I'm here. अरे पानी I'll लेने help गया. you out. मैं आ रहा हूँ, पानी लेने गया. क्या आदमी है यार. अरे मैं इधर कुछ अरे कर रहा हूँ तुम खा रहे हो. I like how this stream is suddenly become like Vaibhav versus Neville, and I just have to go fly on the wall. Like, हाँ, नहीं, क्योंकि थोड़ा यार मतलब पर्सनल हो रहा है ना ये. 10 points to Neville. Yes. बाय द वे, स्ट्रीम के एंड में एक सरप्राइज है जो हम 350 लाइक्स पे रिवील करेंगे. और जो वो 400 सरप्राइज, likes, yes. हाँ 400 likes. 400 400. लाइक्स पे रिवील करेंगे वो सरप्राइज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. तो पहले 400 लाइक कर दो, तब तक मैं और नेवल लड़ते हैं. Yeah. Then I'll just keep on adding points. और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए, एक बार कमेंट करो कितने लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए. प्रज्वाल इज आस्किंग एनी शो सिमिलर टू सक्सेशन. अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ अ शो सिमिलर टू सक्सेशन इज बिलियंस. इफ यू वांट टू वॉच बिलियंस, सिर्फ 2 सीजन रिकमेंड करूंगा मैं, पहले 2, उसके आगे इट्स नॉट अ गुड शो. देयर इज अनदर सुपर चैट बाय पराग. एंड यस, द सरप्राइज कम्स एट 400 लाइक्स. सो अभी 223 लाइक्स हो गए. एंड मैं भी नेवल पानी लेने ही गया था यार, मतलब मेरे को लगा कि वन. अरे लेकिन मैं जब जा रहा हूँ तब 2 मिनट रुक जाता है यार. तेरी अरे प्यास ये तो इतनी इंपॉर्टेंट है. वानी को अकेला छोड़ तो दिया ये तूने. वर्क करता है, वो बात ही वानी से करते हैं कमेंट्स में यार. बट वैभव, यू आर सो क्यूट. I am not यार. The point is okay. This is very good. सॉरी, बोलो. हाँ. हम बात So कर no, रहे I थे mean, like I said, it's a yeah. like all I'm saying is that it's a fairly superficial example because I haven't read the books in years. I haven't watched the movies in years, so I won't be able to get into the nitty-gritties. But I think that the magic system is very flawed. It's not it's not foolproof. There's too many thing because even within the Lord of the Rings universe, you can find some flaws here and there. But I just felt that. But I just feel that there is some thing that cohesively holds it together, whether it's intent, obstacle, all of those things. And आप अगर जॉनथन स्ट्राउड पढ़ो, आप अगर वो स्काई फायर सीरीज पढ़ो, आप अगर बहुत सारे ऐसे फैंटेसी यूनिवर्सेस हैं जहां पे the rules of the system are not conveniently exploited by characters on the basis of convenience. Right? मैं तो गेम ऑफ थ्रोन्स फैन भी नहीं, जस्ट FYI. हाँ, तो ये सही है यार. but मतलब काफी सारे हमारे पास पॉइंट्स है झगड़ने के लिए, बट सही है. इस पे भी अपन लंबा करेंगे कि वील गो इनटू डेप्थ ऑन दिस वन आल्सो. बट झगड़ा हो गया बहुत, बट अच्छी चीजों की भी बात कर लेते हैं. ये वानी, एक मिनट, ये वैभव का ही इंटरनेट है ना जो एकदम वाहियात है. Yeah. You're getting stuck again and again, Vaibhav. सीरियसली? Yeah. हाँ वैभव, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है ये स्ट्रीम पे. अच्छा, मैं यहाँ पे मैं स्ट्रीम की स्पीड तो चेक कर रहा हूँ, ठीक आ रही है. तो आई एम रियली सॉरी इफ दिस इज हैपनिंग, रियली सॉरी. हाँ It's absolutely okay. ठीक है. हम बात कर रहे थे, ओके, हैरी पॉटर की बात होगी, सक्सेशन की होगी. आप अभी क्या मस्त देखा अपने जीवन में, आप ये बताओ हमें. रिसेंटली हम बात कर रहे हैं अगस्त 2021 के बाद पहली बार. कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए. काफी टाइम हो गया. The one thing that I've stopped doing actually, and this is kind of I don't know, it makes me feel better, I guess, is that I've stopped binging shows. नाइस. So I don't do shows straight. Tuck, 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 tuck. I don't do it like that, right? I watch about 4 or 5 shows at the same time, and I allow myself ऐसा. And by binging I don't mean I finish the show together. कभी-कभी अगर 20 मिनट का एपिसोड है तो मैं 2-3 देख लूंगा एपिसोड्स, but I don't. But then when I come back to the platform, I won't watch that. I will watch something else, and then I will watch something else, and then ठीक है. उसमें से एक सिटकॉम मैंने पहले देखा हुआ है, एक सिटकॉम के बीच में हूँ, और तीसरा सिटकॉम नया है मेरे लिए, बट पुराना सिटकॉम है. Like it's an older sitcom, but I'm watching it now, right? So there's Kim's Convenience,
which is a sitcom that I'm watching now. There's Brooklyn Nine-Nine, which I'm rewatching again. Like I'm rewatching it for, I think, the second or third time. And I'm watching Superstore. Now, from these three shows, I watch Superstore the least number of episodes together at the same time. And there's no other reason except for the fact that that's really that's how I sort of enjoy it. I'm not in this place of wanting to binge a lot. What I have started to, and it's surprising to me that I have started to like is I've liked some of the Korean stuff. Like I liked that wo kya Sea of Tranquility, Sea of Water, Sea of Moon. मून पे जो समुंदर ढूंढता है वो लोग, हाँ. एक some vanishing sea of something, sea whatever, कुछ तो समुंदर के बारे में है वो. It's basically moon water, okay. And I know it because of the Sea of Tranquility, which is why I think it's called the calm sea, the quiet sea, the one of those synonyms for tranquil, I think. And so there was that show that I watched. And I watched the whole show. I was like, fuck, wow. Like I actually got through it, right? There was ये बार-बार पे स्ट्रीम पे तेरा ये पर्पल कलर का क्यों आ रहा है? अरे वो एक बार आया यार, आप पकड़ लेते हो यार. नहीं यार, चौथी बार आया है bro. दूसरी बार आया. We've started with एक बार and now he's at दूसरी नहीं, और वो चौथी से चालू करे. अरे मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि स्ट्रीम नहीं रुके, तो मैं दूसरे मॉनिटर पे जैसे क्लिक करता हूँ एक टैब पे, तो वो दूसरा टैब भी खुल जाता है. तो मैं क्रोम पे टैब क्लिक करता हूँ. इसके लिए तेरा इंटरनेट अटकता है ब्रो. 6 स्ट्रीम खोल के रखेगा तो कैसे चलेगा? So there was that show that I watched, and I was blown by just the production of it and stuff. I mean, it got predictable towards the end, and all of those problems that happen with drama series in some cases. But that sort of I really liked. There was another show. यार ये साला उम्र में कुछ नाम याद नहीं रहता है. There was another Korean show that I started watching. What was it about? It was about this superb. It was about this murder and something. I'll try and you'll talk amongst yourselves. तेरे सुपर चैट पढ़ना पढ़ ले भाई. तो अभी जो कितने लाइक्स हो गए वानी? 266 guys. We need 400 for the surprise guys. 400 लाइक पे सरप्राइज आएगा. मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा हूँ क्योंकि लैग ओपी आ रहा है. कितना ज्यादा लैग आ रहा है? हाँ, आई एम जस्ट अभी तो नहीं आ रहा है ना, वो कभी-कभी खटक होता है ना तेरा. हाँ तो नहीं है. ठीक है. या जब तक मैंने तो वो भी I तो also finished watching Afterlife, right? And I'm a big fan of Ricky Gervais. So वो भी मस्त था. नाइस. क्या चल रहा है? हाँ. Yeah. कुछ कह रहे हो वानी? Some people are commenting lag. Some people are commenting no lag. I don't know. But yeah, it's okay. हाँ यार, अगर नो लैग आ रहा है तो लिख दो, तो आई थिंक मैं आई विल बी एबल टू स्नैप आउट ऑफ इट फास्टर. देयर इज अ स्नैपचैट सुपर चैट बाय क्रे कवर. Baba, can you believe Vaibhav hasn't watched Only Murders in the Building, especially episode 5? क्या बात कर रहा है ब्रो? ये क्या आपस में बात हो रही आप लोगों की? तू क्या है? गू देखता है बे? तू है हैरी पॉटर, लेकिन ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग नहीं देखना है तेरे को? हैं? This is nice. Bro, Only Murders in the Building, watch it if you can. It's on Hotstar. Truly, it's great, and it's one of those things that as you sort of watching and you're going with. First of all, it's Selena Gomez and the two gods, Martin Short and Steve Martin. Okay. Right? And it's written by Steve Martin. Okay. And in the middle, there are plots of magic realism in it. Nice. And there is one episode which is just purely cinematic, जो cold open में मेरा cold open में ही देख के बोला, they're going for it. Are they really going for it? Because मेरे को लगा 30 सेकंड का कुछ होगा gag. And I'm like, no, they're going for it. Titles खत्म होने के बाद they've started. मेरा तो mind ही fuck हो गया bro. क्या
अनरियल एपिसोड ये आज ही देखूंगा। कितने एपिसोड है? थोड़ा और क्या ये लाइक हाउ लॉन्ग इज दिस कमिटमेंट? 9-10 एपिसोड है और तेरा वापस खटर खटर हो रहा है। 9-10 एपिसोड है, खटर खटर हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है गाइस, अब खटर खटर होगा ना, अनलेस एंड अंटिल आई फ्रीज, डोंट टेल मी अदरवाइज। या क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रीम स्पीड देख रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं बस वही सोचता रह जाता हूँ कि स्ट्रीम अटक जाएगा। तो ये थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट क्रे कवर। लाइक हम जाके देखेंगे आज ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग। इज इट एन HBO शो? या सो इट्स ऑन हॉटस्टार। हाँ, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। आपको अभी तक नाम ही नहीं मिला क्या? अरे ढूंढ रहा हूँ। मैंने देख लिया है ना शो, Got distracted. मैंने देख लिया ना शो, तो अब मेरे को इट्स गॉन अवे इन सम हिडन और बताओ वानी, क्या फ्लावर। हालचाल? एक मिनट। Wonderful. What else? या टीम नो I लैग just भी प्लीज कमेंट करते रहिए। अगर लैग वाली टीम कमेंट कर रही है तो टीम नो लैग प्लीज कीप let's keep कमेंटिंग। on commenting, no lag. डस्टिन Nonetheless. पावर द सरप्राइज बेटर बी गुड। या हाँ, it's called फ्लावर ऑफ ईवल। कॉन्टेक्स्ट वापस आपको देना पड़ेगा। दिस व्हाट्स कॉल्ड ये एक कोरियन शो है। it's a murder thing, and every episode is they solve one murder, except there is an overall plot line हाँ which is chumma, right? So it's pretty great. गॉट इट। ठीक है, तो हम लाइक अभी जो ये भी देखने वाले हैं, इससे पहले जो क्ले कवर ने बताया वो भी देखने वाले हैं। एंड और बताइए, हमने इतने सारे शोज की बात की थी, तो लाइक व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू आर वाचिंग? मूवीज भी कोई और बताओ। यार मैं जो भी देखता हूँ मैं भूल जाता हूँ यार, फिर मेरे को मेरा वॉच हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा यार, because then I just get like all then I get all confused what I'm watching and what मैं एक काम करता हूँ, I'll tell you shows that I've put in my list that I want to watch. डन। वो मैं देखता हूँ। और currently this is just Netflix, okay? Okay. But thing. So please, first of all, whatever happens, please watch Afterlife. 3 seasons of pure genius, like pure genius. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट आफ्टर लाइफ। ओके, मैंने एक बार पायलट एपिसोड देखा था और मेरे को लगा थोड़ा हेवी शो है। सो इफ आई एम नॉट इन अ गुड हेड स्पेस या मेरे को ज्यादा कुछ सैड नहीं देखना, तब भी मैं आफ्टर लाइफ देख सकता हूँ या यू नीड टू बी, मतलब? मैं कभी लाइफ में हैप्पी नहीं हूँ, सो मैं तो वही हेड स्पेस में हूँ जो इसकी तू बात कर रहा है। और मैं देखता हूँ, लुक टू मी आल्सो द शो इज एक्सट्रीमली कैथार्टिक, द शो इज वेरी वेल रिटन। मैं हर एपिसोड में रोया है, हर एक एपिसोड में मैं रोया है। ठीक है, 20 मिनट का एपिसोड है और वो निचोड़ लेता है। ठीक है, however the last episode I felt disappointed by, not because it was ending or whatever, but I just thought थोड़ा मेरे को ऐसा लेट डाउन हुआ वो लास्ट वाला एपिसोड, लाइक कंपेयर्ड टू थिंग। बट आई ऑल्सो अज्यूम दैट as a creator they have a vision of a certain type, and then if you think Vaani has become a USB port. I was getting a call. Yeah. So there is no right so I think, time to watch Afterlife, like कभी भी देख लो, मतलब? यार मैं तो I mean I watch shows when I feel like watching them. I don't मैं सैड स्टेट में तो मैं सैड शो नहीं देखा। इनफैक्ट सैड स्टेट में सैड शो देखने का मजा ही और है। सो लाइक आई डोंट थिंक I look at it like that. I watch things slightly differently, right? So but okay, I have to come back to my list, right? ओ ब्रो, मैं कल रात को ना एग्जीक्यूटिव डिसीजन, बिग फैन, सो वॉच्ड, रियली लाइक्ड, एंड आई नो सक्सेशन इज एडम मके, बिफोर यू लाइक बट सक्सेशन इज आल्सो एडम मके, आई एम अवेयर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बोल रहा हूँ मेरे को लेकिन डोंट लुक अप इतनी पसंद नहीं आई। चलेगा, एवरीवन, यू लाइक हैरी पॉटर, एवरीवन एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। फिर मेरे को ये देखना है म्यूनिक एज ऑफ वॉर, ये है। हैदर है, मेरे को हैदर फिर से देखनी है। एली वोंग का बिग फैन ऑफ एली वोंग, सो डॉन वोंग करके उसका स्टैंड अप स्पेशल आया है। I want to watch that, and I'll watch it at some point. There's a great old film called Sleepers. It's got it's a beautiful story, and it's beautifully told, and it's beautifully directed. It's great.
फिर एक शो है बॉर्जेन करके, BORGEN, ठीक है. इट इज आई थिंक वन सेकंड, आई थिंक इट्स अ स्वीडिश show. It's either Swedish or it's Scandinavian. I'm just going to say that, okay. And it's political, it's thing, and it's supposed to be the Swedish West Wing. So मैं बहुत excited है उसमें. कमिंस्की मेथड का लास्ट सीजन मेरे को देखना है, मैंने देखा नहीं है, तो मैं वो देख लूंगा. फिर और क्या देखना है, फिर मैं डॉक्यूमेंट्रीज थोड़ी बहुत देख रहा हूँ आजकल लाइफ में. वैभव, तेरी वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी मैंने अभी तक, मैं देख लूंगा. टेंशन में परसों ही तो बोला था, फिर कल पीठ तोड़ दी ना मैंने. तो वो देखना है मेरे को. फिर ये मैंने दिल से देखा यार ब्रो, दैट फिल्म डिडंट एज वेल. Oh, yeah. इस पे एक वीडियो भी बनाया था. Yeah, I think someone made a it's a video. Maniratnam film. Yeah. I don't think it aged well. It didn't. Yeah. थोड़ा ऐसा, I was like, oh, okay then. Yeah. तो वो देखना है. What else? एक बात बताओ, आप बाई चांस कोई चीज है तो ये सब आप लाइक लैपटॉप या मैं रॉकेट बॉयज देखा मैंने. कैसा लगा? So I'm liking it from a history narrative sort of standpoint. It's not as great as Scam 92, if that's what you're expecting, but it's got a really nice, and I'm a sucker for like things that do history and things like that. Like, I'm a proper sucker, like I love those things. तो मैं वो देखा है. फिर मैं what's it called, फिर मैं एक और सोनी लिव पे एक और शो है जो मेरे को देखने हैं. अभिषेक बच्चन है उसमें. नहीं, हाँ अभिषेक बच्चन नहीं, वो फिल्म है, सॉरी, मिस्टर विश्वास देखना है मेरे को. कहानी की कुछ प्रीक्वल या वो जो है वो वाली क्या? जी पे बॉब विश्वास या जो भी है वो, मेरे को वो देखना है फॉर श्योर. देन ऑन हॉटस्टार How I Met Your Mother in a show. I thought that the writers would have learnt from their mistakes, where they wrote themselves into a well, right? Because that premise of I'm going to tell you in flashback stories about your mom and how we met is a limited premise, because it's actually a sketch idea, right? How I Met Your Mother is a sketch idea. तुम 2 सीजन निकाल लोगे उसके ऊपर, उसके बाद तुम्हें उसमें वो बेचारा है ही नहीं, बार्नी है कैरेक्टर उसके बाद, because at least you could do shit with him, right? And everything is, this is the past, and then past से past में जाना, मैं ट्रिपल फ्लैशबैक, क्वाड्रिपल फ्लैशबैक, ये सब चल रहा है. So I thought that they would have learned from their mistakes. Except there is a show called How I Met Your Father, which has come on Hotstar Plus. ठीक है, तो मैं वो दिन ऐसा हॉटस्टार पे कुछ घूम रहा, मैच देखने का कुछ गया, How I Met, मैं बहुत क्यूरियस, तो मैं ट्रेलर देखा. सो द ट्रेलर वाज अबाउट सेइंग दैट How I Met Your Father in 2022 से शुरू होता है या 2021 में शुरू होता है, कि एप्स पे मिले थे. और बोला ओके, मैं पहला एपिसोड देखा, मैं 7 मिनट में रियलाइज किया है कि ये लोग ने वही, दे हैव रिटन देमसेल्व्स इनटू द सेम ट्रैप, एंड इट्स गोइंग टू बी द सेम प्रॉब्लम that they're going to face, and it's so terribly written as a sitcom. I'm like, why would you allow this thing to sort of happen? And it's very bad. Sorry. So that was something on Hotstar that I was curious to watch. मैंने Hotstar पे 2-3 और चीजें अपनी, एक शो है जो कामरा ने मेरे को बताया था जिसके बारे में, और मैं बहुत एक्साइटेड था वो शो देख के. इट्स कॉल्ड द प्रेमिस. It's written and created and this thing by BJ Novak, जो ऑफिस में था ना. So it's written and created by BJ Novak, right? And it's a great show. It's I don't even know how to, what's it called, how to classify it. It's like, you know, one of those, like, is it sketch, is it you don't know. So बहुत इंटरेस्टिंग शो है. फिर मैं इम्पीचमेंट, अमेरिकन क्राइम स्टोरी का इम्पीचमेंट देख रहा था. मैं एपिसोड 5 तक हूँ, मैंने ज्यादा खत्म नहीं किया.
तो मैं वो देखूंगा. फिर एक और शो था which I sort of liked. I May Destroy You मैंने देखा था, खत्म कर दिया. Great show. Great show, no? Yeah. Very good show. Very good show. Very well told. And thing. और मैं नीरज पांडे का बहुत बड़ा फैन है. तो मैंने वो के मेनन का पहला वाला और दूसरा वाला दोनों खत्म कर दिया. मेरे को कोई I loved it. The second one, I just don't know what they did to his face, but I sort of loved it a lot, and I truly enjoyed it. फिर और क्या था? और कुछ है क्या जो मैं एक बात बताओ, बीजे नोवैक ने like is he the creator of more shows? Like मेरे को मतलब पहली बार सुन रहा हूँ कि yeah I know he's a writer BJ. and like but like created by. Yeah, he's done some stuff. He's done a lot of wait, I'll just tell you. Fuck, he was also a writer on The Office. हाँ, so, I know that. As a writer, I know, but the showrunner or the creator of any show, मैं ये premise मैंने पहला सुना है. No, he's done films also, no? I think so, हाँ, but like Yeah. as the main guy मैं वो पूछ रहा था. From what I remember, I think Mindy Project also he had written a lot. So I mean, I don't. Got it. I'll have to read it. एक बीच में हम छोटा सा वानी कितने लाइक हो गए? Sorry, you were also asking me where do I watch it? Means Yeah. what does that mean? The whatever premise कहाँ platform पे is है? हाँ, available. exactly. Oh, Hotstar. सारे हॉटस्टार के I बता was रहे going थे? through. I was going through my watch list on different Nice. places. तो आप यहाँ पे for फोन you. पे नेटफ्लिक्स देख रहे थे? रिमोट यहाँ पे फोन पे देखे, वहां पे मैच चल रहा था तो मैं हॉटस्टार पे बैक जाके प्राइम पे कहाँ पे देखने वाले हैं हम? प्राइम टीवी चालू कर प्राइम. हाँ, वानी कितने लाइक हो गए? 328. नेविल आपने एक बार भी नहीं बोला यार लाइक करने के लिए, डांटो ना यार. अरे मैंने तो ओपनिंग हाँ, नहीं मैंने तो ओपनिंग में बोला था लेकिन यार. तब 50 लोग थे, अब 350 लोग आ गए. और कितने लाइक्स हैं? अभी 323 लाइक है और 350 लोग देख रहे हैं. तो हाँ, उधर ही 25 का डेफिसिट है. I'm not understanding. And then if you take one family member's phone and like it from their thing, you should have doubled it. You should be at 700 like. What is this crap? ये तुम लोग मत करो, बंद कर दो स्ट्रीम, छोड़ो. 10:48 हो गया, वैसे भी तेरे को काटेंगे, काट दे, खत्म कर. क्या है ये सब? हट, नहीं देखने हैं, बोलो आउट, चलो बाय बाय, सी यू, एंजॉय योरसेल्व्स. लाइक करो यार, क्या कर रहे हैं ये लोग? So yeah, sorry. प्राइम. अरे अभी प्राइम खोलना पड़ेगा. प्राइम तो मैं 2-3 शोज के लिए मैं प्राइम थोड़ा ऐसा लास्ट खुलता है मेरी लाइफ में. सो बट आई टेल यू अभी फोन पे खोल रहा हूँ क्योंकि मैच चालू है ना. और बहुत बुरी तरीके से हारने वाले. I was watching Madam Secretary. I really liked Clarkson's Farm. Okay. I really liked it. I sort of felt empathy towards him towards the end, and I really liked that. Fleabag तो सबने देख ही लिया है, तो मैं वापस उसका सुपर्ब करके बीइंग द रिकार्डोस पे भी इधर ही देखा था मैंने. बीइंग द रिकार्डोस प्राइम पे पड़ी है. हाँ. But like you are not recommending it, no? I mean, read the screenplay, it's better. Got it. Family Man, great show. Yeah. I loved it when I watched it. Yeah. I'm just trying to see. There's not a lot that I watch on Prime. I watch all that like football stuff. अभी ये रूनी का डॉक्यूमेंट्री आया, वो सब देखेगा. हाँ. तो ऐसा प्राइम पे ज्यादा कुछ ऐसा हेवी ड्यूटी वॉचिंग नहीं होता है मेरा. It's almost my second last or third last thing because खटकता ही नहीं है कि चीजें हैं उधर. So शिट, इंडिया जीत गया ब्रो, क्या बात कर रहे हैं? माँ के आंख, इस ओवर खत्म ही हुआ. 187 नहीं बनाया ब्रो, 178 for 3. कम से कम मारो ना लास्ट 10 ओवर में. चल रहा है इन लोग के लाइफ में. अच्छा वैसे नेविल लाइक आई एम श्योर आपने बाकी स्ट्रीम्स पे इसकी बात की होगी. इट वाज लाइक द टॉक ऑफ द टाउन. शार्क टैंक इंडिया के बारे में क्विक अगर आपको कुछ बताना. डिडंट वर्क फॉर यू? I watched the first episode. वो फर्स्ट एपिसोड का 10-20 मिनट ब्रो नहीं है मेरे पास उतना टाइम. सॉरी, cannot waste my life watching a show just because it's memeable. Sorry. Okay. Not. Okay. I know that there are a lot of people who actually enjoyed it, but it's just not my cup of tea. Like, got it. I'm not going to. I'm not. It's so bad. It's good, dude. Nice. It's so terrible.
It's good, right? So अब लैग है, there's अब that. असली लैग है। ओ नहीं, अब चला गया लैग। तू डिसाइड कर ले यार वैभव, Okay, ये Vaibhav is खुद done. अटक गया, वो चला गया, वो लैग करके खुद चला गया। फुल लैग वैभव, हमने वो तेरे को 3 पोजीशन में देखा, ये पोजीशन में देखा, फिर ये पोजीशन में देखा, फिर ये पोजीशन में देखा, जीरो ठीक है? जीरो 3। जीरो के भी पे जा रहा है यार। ठीक है, हाँ हाँ, सॉरी हम्म, सॉरी सॉरी। और ये तो ये cool. ओटीटी में और कोई प्लेटफॉर्म बचा है क्या, जो ये जहाँ पे कोई मेन कंजम्पशन आपका होता है? हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, जी पे थोड़ा बहुत होगा, और सोनी लिव लिव का हो हो गया। गया, लिव हो गया, और क्या है? और वूट पे तो मैं सिर्फ मैचेस देखता हूँ गॉट इट गॉट इट गॉट इट। हाँ, बस। डन डन डन। और मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, अभी किताबों वो भी हाँ चालू है। हाँ हाँ हाँ। So I'm reading currently, as of this moment, I'm reading the second draft of a manuscript by a comedian. हम्म Okay, so by a friend of mine, and it's too good. It's super pacey. The second draft is so much pacier, so I'm extremely happy about that. I'm reading that. I am reading Stephen Fry ka Mythos wala series, um, simply because at some point I have to, at quizzing in the comedians, I हम्म can't lose out on Greek mythology, dude. हम्म I'm done losing to questions of Greek mythology. हम्म So I'm going to be reading that. So I'm reading that currently. I'm reading this. I'm also just about to start reading because people have told me, and like I want to also, Atomic Habits. नाइस। I know that people have said it's great and all. So अब एक बार तो पढ़ना पड़ेगा. I know it's a self-help book, but चलो पढ़ ही लेते हैं. There's a lot of मेरे को ये सारी ऑस्कर्स की पिक्चर देखनी है, वो मैं देख लूंगा. I also was I'm also doing, I've also gotten into one more thing that's very surprising because I never really thought I would like it, which is audiobooks. नाइस। And I never thought I would like it simply because it is so dependent on the, like I, मैंने ये पहले भी बोला है, right? Like the book allows you to imagine any sentence the way you imagine it. So my experience is very different from Vaani's experience, is very different from Vaibhav's experience reading the same sentence, right? But the minute you add a voice to it, suddenly that voice is coloring the thing. Like I'll tell you, Anxious People, I started reading as a physical book. Okay, and then midway through it, I started listening to it as an audiobook because I was driving for a distance. So मैं बोला चल ऑडियो बुक ले लेता हूँ और ऑडियो बुक पे खत्म कर लेता हूँ किताब. Bro, I love the book, but like the audio book made it slightly different. Like it made the experience different because the way I imagined certain things Yeah. is not necessary. And believe me when I tell you, Anxious People, the audiobook version of it is beautifully read. Okay, it's not a half-assed job. It's really well done. But I don't know, it just felt so. Now if I do an audiobook, I just do the audiobook, then I don't try to read it first or read it later because it will always be slightly different, right? यहाँ पे नेवल एक चीज पूछनी है। एक मेरा एक बुक्स को लेके वो है, जैसे आपने कहा कि हर जना सेंटेंस को डिफरेंटली पढ़ता है, राइट? तो एक मैनिपुलेशन होती है जो आई डोंट नो इफ आई हैव आस्क्ड यू दिस बिफोर, बट दिस इज समथिंग आई एम रियली इंटरेस्टेड इन। जब हम फिक्शन पढ़ते टाइम मैनिपुलेशन करते हैं, राइट? कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऑथर ने बोला है रात हो रही है, ये चल रहा है, और लाइक सडनली ऐसा हुआ। अब मेरे को है, उसने सडनली बोला अब दिन हो गया, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को रात इमेजिन करने का है तो मैं रात इमेजिन करता हूँ। आप समझ रहे हो? लाइक समटाइम्स अब जैसे 40 क्योंकि मैं चूतिया नहीं हूँ. I know what you're saying. 40th पेज पे ये लाइक जिस पे लाइक मान लो अगर उसने बोला है कि यार बंदे के लाइक द गर्ल हैज अ नोज रिंग, उसने अभी तक बताया नहीं और एकदम से बोला इसके नोज रिंग है, तो मेरे को नहीं इमेजिन करने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शर्लॉक होम्स जहाँ पे ये डिटेल इंपॉर्टेंट है, राइट? But like the way someone looks, the way the weather is, the way things are, like, do you do those manipulations or are you completely like stick to the script? No, I think it's got to do with, is there a particular book or a narrative where you've experienced this problem? The reason why I'm asking is because there is something called author's bias and there's something called the reader's bias, right? When you are reading something
as an author, when you're reading something as a reader, it depends on so many factors, right? Like earlier, there used to be this thing of even to cut author's bias, there used to be this thing, and I still know a couple of people who write screenplays like this. Like they will lock themselves in the room for 15 days, but they will not experience anything new. By that, I mean, they will not necessarily read the news. They will not necessarily allow a breakup to happen. They will not allow themselves to fall in love. Like allow themselves to fall, मतलब तुम कमरे में बंद हो, किससे fall in love करोगे? But what I'm trying to say is they will not allow for any newer experiences to come, because they believe that the experience alters the tonal text of the voice that you're writing it, right? Now, while that is the case, I don't subscribe to that as an author, because I think when you're writing something, it's okay if something sort of comes in, because when you do a second pass at it, you're anyway looking at it after a certain period of time. You don't finish a book and then do a second pass literally immediately. You'll do it. यहाँ मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ इसी जिस पे आप मुराकामी पढ़ रहे हो, ठीक है? मुराकामी में जापानीज कैरेक्टर्स चल रहे हैं. जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में जो आप कैरेक्टर्स इमेजिन करते हो, वो जापानीज होते हैं या भारतीय होते हैं या खुद होते हो? खुद तो कभी नहीं होता. Even when I was reading Catcher in the Rye, where it was me only, Holden Caulfield is me only. But I'm saying, because I read it when I was 17 or 18 or something. And if you read Catcher in the Rye when you're 18, you are Holden Caulfield, right? That loser, that despo, that creep, that you're all of those things. You're like this guy who is so confused, who like just thing, right? So even then, I still imagine Holden Caulfield. I think a lot of things make a difference on to the way I consume stuff. It depends on the name. So if I'm reading a Murakami, it depends on what the translation has done to it. If I'm reading like when you say Anne Frank, when you're reading Anne Frank, you're imagining a young blondish girl, right? Or a girl with brown hair or black hair, right. Or and as your bias increases, like when you read Anne Frank when you are really young, if you read Anne Frank when you're really young, you're going to imagine a generic foreign girl. So she's going to have blonde hair. Right. But then when you start to look at the nuance of it, the Nazis were known for blonde hair, which means should Anne Frank actually have had blonde hair? Now, but that's a construct that comes into your head after you've read Escape from Sobibor, Mitla Pass, 15 other World War II books, watched Guns of Navarone, etc., etc. And by the time you're 27, 28 and you read Anne Frank again, then you'll probably question it and see it differently. So I just think it depends on where you are. पर आपने मुराकामी का नहीं बताया ना. मुराकामी में आप बताओ, ये नॉर्मल ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो तो आप जापानीज शक्ल इमेजिन कर रहे हो या नहीं? Like I said, I think it's got to do with it totally really depends, because sometimes even a lot of the times the characters are faceless, right? Exactly. That's what I'm getting to, right? Do they have faces or not? Not necessarily, not always. I mean, unless and until there is a specific reason for them to have a particular feature or a particular part. That's what the thing about a book is, right? Like it allows you to mold something into the world when you need it. Right. It doesn't like if you read a John Grisham book, the first 45 pages are, oh my God, I want to shoot myself, right? Of course, when we were kids and we were reading John Grisham, I loved it. But still, those first 40 pages were still exhausting to get through because it is filled with detail. मतलब ऐसा उसके टेबल पे एक पेपर वेट है जिसका वजन 2.5 ग्राम है, उसके बाजू में एक टाइपराइटर है जो उसका चौथा की अटका, अरे नहीं जानने का है भाई, तू चलना आगे बढ़ना. As opposed to Agatha Christie, who has pace, or Earl Stanley Gardner, who had pace, right? So I think I truly believe that a book allows you to mold as you are reading it. It allows you to make things appear or disappear as you are reading it. अगर कैरेक्टर के पास नथनी है तो वो नथनी उतर भी सकती है ना, परमानेंटली नथनी नहीं है ना उसके पास. So अगर ऑथर ने बोला है कि वो ब्रश करते वक्त उसका टूथ ब्रश उसकी नथनी में लग गया, तो तभी है उसके पास नथनी.
और नेक्स्ट टाइम नहीं है जब उसकी बात नहीं होगी। अगर अभी तू तेरे को इमेजिन करने है बिना नथनी के तो ठीक है, करना इमेजिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज आई डोंट थिंक इट्स as fixed as that. I think the books allow you to keep creating the world. It's, or the books are the ultimate metaverse, right? Because you can add any element to what you want when you want it. Exactly. Now it brings to the me back to the first question. ये जो fluidity की बात कर रहे हैं कि सब fluid होता है, तो आपने कभी वेदर चेंज नहीं किया किताब पढ़ते टाइम कि यार ये मैं मेरे हिसाब से इसमें कुछ एडिशन कर देता हूँ या सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ कि क्यों? क्योंकि समटाइम्स आप भी तो पढ़ रहे हो, यार स्पेशली तेरे इन को अगर साइंस तू फिक्शन। किताब पढ़ रहा है, अगर आप साइंस फिक्शन पर्टिकुलरली पढ़ रहे हो, लाइक कि यार आप ये वो अलग येलो टोन्स चल रही है बट आपको नहीं इमेजिन करनी है येलो टोन्स, लाइक इतनी तो आप लाइक मॉडर्न बट किताब में येलो टोन कौन बोल रहा है? अगर तेरे को वो बोलते बोल हैं रहा है कि यार स्पेस, ऑथर्स। तू हाँ अगर, हाँ मैं बोल रहा हूँ अगर तू स्पेस में है, हाँ। ठीक है, आर यू स्मेलिंग गन पाउडर? नहीं ना, क्योंकि तूने एक्सपीरियंस ही नहीं किया स्पेस, राइट और तू रोज गन पाउडर सूंघता नहीं है। राइट। So as a result, when you say space in your head, the definition of space is vacuum, because that's what's been fed to us. Okay. And so to you, space has no smell, but that's not true. Okay. So that's not true. So unless and until the author feeds you that information of it smelling like gunpowder along with a couple of other things, you are not feeling that sense and building it. But I also think that as you read and as you grow, and तू अगर एक किताब सर्दी में पढ़ रहा है और उसने तेरे को बोला है कि एक आदमी रास्ते पे चल रहा है, तो तेरे मन में वो तो सर्दी है आएगा। हाँ, बट क्योंकि इट्स व्हाट योर सबकॉन्शियस माइंड इज फीलिंग एट दैट पॉइंट, राइट? पर मैं ये कह रहा हूँ कि जान के सर्दी फोर्सिबली भी मैं जानबूझ के नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू, आई एम सबमिटिंग माई सेल्फ टू द ऑथर when I'm reading. Yeah, but like it's मतलब I'm just saying the other यार thing तो is तू also किताब fun. तो तू मूवी देखते वक्त भी करना ऐसा, ये इसने कुरोसावा ने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों बनाया, लाल खून डालना, बेंचो ब्लू कलर का खून चाहिए मेरे को, क्यों इमेजिन नहीं करते तू? तो उधर क्यों नहीं करता ये सब व्हेन अ मूवी इज बीइंग शॉट? सक्सेशन में क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे कह रहा हूँ, कभी कभी मैं इसको स्क्रिप्ट के जैसे देखता हूँ जब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, लाइक दिस इज यहाँ पे एक थोड़ा ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के जैसे देख लो। आई एम रीडिंग अ बुक एंड इट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर मी एंड आई एम लाइक ओके, लाइक यहाँ पे मेरे को जो भी चीज़ मेरे को सही लग रही है 80% 70% ठीक है। इसलिए तो जो किताब होती है हर डायरेक्टर उसको अलग तरीके से, जब आप जाके हैरी पॉटर देखते हो या एनी फिल्म जिसके अडेप्टेशन थे, इन्होंने यार किताब खराब कर दी क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन इमेजिन्ड इट डिफरेंटली। मैंने तो हरमाइनी ऐसी इमेजिन की थी, मैंने तो रॉन वीजली ऐसा इमेजिन किया था। एवरी वन इज डूइंग इट, बट दे आर नॉट ओनली डूइंग इट विद द कैरेक्टर्स एंड नथनीज, they are also doing it with landscapes, they are also doing it with the atmospheres. Yes, but the Harry Potter films, I don't know a single person who has said that they've destroyed the books. The only thing that people have said is that they didn't have enough of the book in the film. They left out a lot from the book, which is not the same thing as they've destroyed the book. But in mostly adaptations, this is what people say. That they have destroyed the books. Yeah, but I also think it's got to do with like that's what I'm saying, no? Like it's got to do with like when you're watching a movie, if you are submitting yourself to the process, why is a book that is giving you what age did you start reading voraciously? मैंने किया था लेट किया था 17-18. So your first storytelling things were images? Good point. I think so, yeah. Yeah, हो सकता है. So then maybe there is that, right? Because you're not questioning that form of art where you are submitting into the process. Right. I'm not saying all of us watch cartoons, right? Hanji. All of us watch cartoons. All of us read comic books. All of us read Tinkle also, or Chacha Chaudhary or whatever, right? But in some form or the other, Chacha Chaudhary, if I say to you, there is only one character that comes to mind. There cannot be a second character because Chacha Chaudhary was fed to you in that avatar. So I just think that it was what I feel is that I may think that because you came in late, your first medium is visual, and so you are either not submitting yourself to the art form entirely, or you are saying, how does this become a विजुअल स्टोरी? अगर तू हर किताब को अडेप्ट करने का कोशिश कर रहा है, तो हर किताब अडेप्ट नहीं होएगा. फेयर इनफ. कैचर इन द राय का पिक्चर नहीं बना है और बनेगा भी नहीं, राइट?
So I mean I'm saying but you look at Hitchhiker's Guide to the Galaxy, पहले बुक का पिक्चर बनाया और उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं किया किसी ने. Got yeah, 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 yeah. Right, because you can't, it's not attemptable, and that's science fiction which should be attemptable, but Yeah. it's not. Yeah. यहाँ पे मैं पूछना चाहूँ लाइक कितने हो गए पहले तो मेरे को ये बताओ. 424. अरे भाई चलो सरप्राइज का वक्त आ गया है. कैन वी रिक्वेस्ट दैट लाइक हमारी I टीम have- से कोई हम जिससे आपको मिलवाना चाहते ये हैं. हिंडोल है क्या? नहीं. हाँ हिंडोल आएगा तो मेरे को ऐसा मास्क करना पड़ेगा, मास्क. वो आएगा पिकाचू. तो अगर Hey, I really don't know I don't know what the thing हिंडोल है, देख हिंडोल ही है, बोला था हिंडोल ही आया है. नमस्ते. Neville, hi. नमस्ते. तू खुद अभी पिकाचू लग रहा है साले. तो बोलो. हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सोलो क्विज बनाया है. मैं पिकाचू नहीं बोल रहा, मैं अभी हाँ आप अकेले हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग विद योरसेल्फ. बोलो. और हाँ बताइए हिंडोल व्हाट्स अप. First of all, I'm really sorry for being late. And coming in your dreams, Neville. I'm sorry for coming in your dreams. I don't call them dreams when Hindol is there. Yeah. मैं मीरा रोड से निकला था 7:30 बजे की सोच कि घर पहुंच जाऊंगा, बट या हियर आई एम फाइनली. Yeah. सो या कोई है अगर बॉम्बे में मीरा रोड से देख रहा है तो बताओ यार. Yeah. But बताओ यार पॉइंट बोलो. पे आते हैं हिंडोल. What have you planned? मास्टर प्लान बताओ तुम्हारा. हाँ प्लान नेविल मैं पहले ही बता दो, प्लान मेरा नहीं है. ये वैभव का प्लान था, मैं एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट, है ना. हाँ वैभव ने बोल दिया कि क्विज नहीं है तो शक्ल मत दिखाना चैनल पे, सो यही है. When you all started, you all were such friends with each other. Now look at it. Thanks Neville. Thank you so much for. Quiz है तो कलम कागज तो निकालो. हाँ अब इसमें बस ये है बिकॉज अभी वही बात हो रही थी ना, क्लासिकल ड्रामा स्ट्रक्चर वगैरह. सो देयर इज अ 5 क्वेश्चन वर्जन ऑफ दिस क्विज, देयर इज अ 10 क्वेश्चन वर्जन ऑफ दिस क्विज. व्हिच वन डू यू वांट टू अटेम्प्ट? Whatever you want, bro. Look, I have COVID brain. मैं इधर शो का नाम लिटरली नेटफ्लिक्स पे सर्च करके आंसर कर रहा हूँ भाई. I have COVID brain, bro. There is no way on earth I'm going to get things right. I will attempt. हम I will टाइम do के my हिसाब best. से भी पूछ रहे हैं 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन. व्हाट वुड I don't care. मेरे को eventually 10. हाँ Let's रुको, do फिर it. मुझे एक क्वेश्चन है जो मुझे एंड में शिफ्ट करना है, मुझे 2 मिनट दे दो. हाँ तब तक he wasn't prepared for this, but और Hey, क्या- bro, already पीठ दुख रहा है. क्या कर रहा है? और अच्छा किस जॉनर का है ये क्विज थोड़ा बताओगे? हाँ जॉनर. हाँ तो जॉनर बेसिकली दिस टाइम इट्स नॉट जस्ट मूवीज, सो इट्स अ जनरल नॉलेज क्विज वेयर वी आर It's the General worst toilets. thing, dude. 'Cause it took Vaibhav to say what was his name that Vaibhav said incorrectly. अरे ये उसने बोला रूफार फुरफार ऐसा कुछ बोला उसने, फिर मेरे को रूपर्ट मर्डॉक समझा. I didn't remember Rupert Murdoch's name, Hindol. So today is really not the best day. नहीं बट इट्स ऑल टॉपिकल, मतलब रीसेंट अगर आप Topical. Even worse. वो even Even worse. Who gives a shit? हाँ एक सेकंड मैं जस्ट चैट डोंट वरी. निर्वाणी आप बताओ यार, लाइक कुछ बोले ही नहीं पूरे स्ट्रीम पे. आप नेवल हमसे तो पूछते ही नहीं क्या चल रहा है यार. पूछो यार वानी. I feel Vaani, what are you reading? हाँ Tell me a book that's blown your mind, no, in the last whatever 6 months or 8 months or something. A book that you read that you were like, fuck, from a writing structure, anything. It was I have to wear my specs. Sorry, I forgot the ये name. देख हिंडोल, ये तो हालत है हम लोग सबकी. नहीं It was On Earth We Are Briefly Gorgeous. It is On Earth We Are- कौन है? it's by Ocean Wong, and it's a letter from a son to a mother who cannot read, and it's very beautiful, and also Cost of Living, and also Whale Sweet. सारी अबू कमंत की किताबें. हाँ. You're also on Goodreads, no? I'm assuming. अरे वानी टॉप लाइक फॉलोड Good, पर्सन इन good. इंडिया थी.
अभी 4 महीने पहले, I am not very active on और अब Goodreads. उसने फिर No, एक्टिव होना nobody छोड़ is. दिया. Nobody is. Yeah. You shouldn't be also, because I think what Goodreads does is it what ends up happening with Goodreads is that a certain clique of people follow you and you follow a certain clique of people, then you're only reading a certain type of stuff. हाँ. You're not actually expanding. So like that whole browsing format has truly gone away, right? Like you're एक बार आपने चिमामांडा पढ़ लिया, फिर आप उसके बाद सीधा वो ऐसा मैरी कीज ही पढ़ोगे, फिर उसके बाद यही like then you'll be stuck in that Yeah. universe of reading, and it's great that you'll never then move out and look at another option till you're done with this or till you're done with that. और मेरे को उसमें थोड़ा ऐसा feeling होता है, like I like reading stuff that I'm like when I read Anxious People I was like, eh? Like, you know, or when I read Humans, I'm a Matt Haig fan, but when I read Humans I was like, fuck, it's a great book, right? Like, Yeah. so yeah. I just have one small question. Neville, आपने मैट एक मेंशन किया, तो मैंने अभी सिर्फ मिडनाइट लाइब्रेरी पढ़ी है. हैव यू रेड मिडनाइट लाइब्रेरी? Yes, Midnight Library तो पुरानी है, तो first पढ़ा था. हाँ. So what do you think about Midnight Library? I'm a very big Matt Haig fan. Right. So I like the way the book is written. I like the there's a, what's it called? A certain magic to the book that comes through, that there's an innocence to the book that sort of wafts over you as you read it. Like a small, I don't know, like it's this, I don't know what else to say about it. I'm terrible, which is why I don't book pube. But there is an innocence to Midnight Library, right? Like, which, it also reminds me of, this is going to be blasphemy, but I'm going to say it anyway. It has the same innocence that Curious Incident of the Dog in the Nighttime has. You know, it has that जो उसका नुक्स है. I don't know. I don't know. Nuks soapy हो जाए चैट में, nuks soapy. There's something, I don't know. There's something like about it which I really liked. Sorry, apologies. नहीं, वही मैं I was hoping कि आपको पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. तो बट ठीक है, मुझे वैभव पसंद नहीं है Midnight Library. क्यों बोल. है अब बहुत सारे रीजन. अरे बोल ना, इसको हैरी पॉटर पसंद है. Midnight Library. नहीं वही कहता है, वैभव ने बहुत लड़ाई कर ली, तो आई डिडंट वांट टू. अरे no, it's not a ladai, dude. There are lots of people who love other books that I despise with a vengeance, and it's okay. बताओ Hindol. It's what people like. The main reason I didn't like Midnight Library is the same reason why you didn't like Succession, is that I didn't feel anything for the main character. मुझे बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हुआ कि मतलब वो एक एंड पे आप बता रहे हो कि भाई वो एस्ट्रोफिजिक्स में क्या कुछ तो था उसको बहुत. I'm yet to read it. हाँ नहीं, कुछ तो होता है. तो फिर रहने दे हिंडोल, बाद में. ठीक है बात नहीं करते इसके बारे में. WhatsApp. Also, I was writing something and it turned out very similar to this, so now I hate them. इसके लिए पसंद है यार. वो main reason है. बोलो. बताइए सर हिंडोल, are we ready? हाँ हम रेडी हैं. तो कोई कुछ है? अच्छा नहीं यार, 400 लाइक करवाया यार एक बार तो यार. चैट के लिए now. हाँ, चैट के लिए तालियां हो जाएगा. व्हाट इज द इंटरनेट इक्विवेलेंट ऑफ तालियां ही बजा दे. 400 लाइक्स हो गए आज. ये होगा ओपन माइक नहीं क्या वो. हाँ, पोएट्री स्लैम. स्लैम पोएट्री. रूपी कौर शाउट आउट. हाँ चलो, तो हाँ स्लाइड रेडी है हमारी, और इसमें मेरा व्हाट्सएप ना दिख जाए तो दिक्कत हो जाएगी. हाँ, here we go. अगर तेरे नोटिफिकेशंस ऑन है तो आ जाएगा. So then you might as well just pull this tab out. गहराइयां ओपी हो जाए नोटिफिकेशन ऑन पे गाइस. वही मैं कहने वाला था. गहराइयां देखने के बाद मैंने ऑफ कर दिया. गहराइयां देखने के बाद डेस्कटॉप व्हाट्सएप किसी को यूज नहीं करना. मैंने नहीं देखा वो फिल्म अभी तक. फेयर, नो कॉन्टेक्स्ट स्पॉइलर है. सो दिस इज नेवल स्पेशल. भाई लोगों को चेंज हुआ है, कितनी मेहनत की है भाई सरप्राइज के लिए. नेवल देख रहे हो, उसने चिपकाया बीच में एक टेप. ठीक है, चलो. तो हाँ, सेफ्टी इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट. तो हाँ, रूल्स वही है. आई थिंक यार आप लोगों को भी होना चाहिए, बिकॉज देन थोड़ा इसमें मसाला आएगा.
हाँ, तो it's Neville against Vaibhav, Vaani, I and actually have the cheat sheet right open in front of me. अरे तो हमें मत लो, ठीक है, लाइक इट्स नेविल वर्सेस द चैट. हाँ, वानी बताओ अब 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है? Let me. नहीं, चलो चलो आगे चलो आगे हाँ, चलो, तो डोंट हाँ, वरी, तो अपन नेविल हाँ, अकेले. तो वही हाँ अब हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पिकाचू है एंड प्लीज चैट मत देखिए एंड और क्या ही बोलूं, 10 क्वेश्चन है एंड हुएवर विंस विंस, बस यही है. नेविल, दैट लाइक इज द अपन रूल ऑफ इसमें लाइफ. थोड़े स्टेक्स हाँ चेंज करते हैं. हाँ, थोड़ा मैं मसाला बढ़ाते बताता हैं. हूँ कि 10 हाँ मान लो हर के 10 पॉइंट्स है, ठीक है. लेट्स ट्राई हाँ कि नेविल स्कोर्स एटलीस्ट 70 पॉइंट्स. ठीक है, लेट्स ऑल वाउच एंड लाइक रूट फॉर नेविल स्कोरिंग 70 पॉइंट. डिसेंट है ये, हाँ अपन कर सकते हैं. 10 में से 7 आने चाहिए. हाँ, ठीक है, फिर क्या होगा? नहीं फिर अच्छा है, मतलब लाइक सब अच्छी नींद के साथ सोएंगे. लाइक गुडविल के लिए कर रहे हैं, दिस इज अ गुडविल क्विज ना. हाँ. क्या अच्छा माँ चोद रहे हैं, चांस ही नहीं है ये सब होने वाला, तुम लोग भी नहीं. हाँ, चलो 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 ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप एंड चैट में भी गाइस गाइस, दिस इज प्लीज अ जीके फुल ऑन. क्विज. प्लीज हाँ स्ट्रीम लाइक कर दो एंड जो लोग पहली हाँ बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो जल्दी से. 1 लाख सब्सक्राइबर हाँ, कराओ हमारे. एंड आई होप जो भी पहली बार हमारा क्विज देख रहे हैं ऐसे वियर्ड आउट ना हो जाए. हम थोड़ा ऐसे मसाला मैगी वाला क्विज है ये हमारा, तो प्लीज बेयर विद अस. Yeah. एंड फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. So this is about some person named X, real life person X. So written by Canadian playwright Gabriel Emmanuel. The eponymous play X opened first in Toronto in the year 1985. The play has been mounted across the world, but is popular in a certain West Asian country due to the real life personality X. Interestingly, X had also been requested to become the second president of the said country in 1952. Who played the role of X in a popular Indian production of this play? तो ओ माँ सब चोदी, मतलब तेरे को वो रोल भी नहीं चाहिए, तेरे को इंडिया में किसने, ओ माँ की हाँ. हाँ, so I will give X also. अगर वो नहीं आंसर होता, my first priority is actor, but अगर एक्टर नहीं मिला तो हम काम चला लेंगे. तो सब Okay, so it हाँ opened in 85. हाँ, so this is about some personality जो 20th century में थे एंड बहुत पॉपुलर थे. वेरी एक्टिव इन द 40s वाला डेकेड, उस टाइम पे भी बहुत न्यूज में थे. एंड वेस्ट एशिया की एक कंट्री है जिसके साथ इनका कनेक्शन है कुछ, एंड that country wanted him to become the second president. Now think of countries which recently started having presidents, and why would they request someone who's not originally from their country to become the president? कुछ तो लोचा होगा वहाँ पे. And yeah, that's it. एंड अगर आप बड़ा हिंट दूं तो अगर आप चलचित्र फॉलो करते हैं और अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको आंसर पता होगा. तुमने वो अच्छा मैं समझ गया. आई जस्ट होप. या हाँ. एक सेकंड, वानी नहीं है क्या? नहीं, वानी अभी नहीं है. वानी वानी ने पानी ब्रेक लिया आई थिंक. अच्छा इतना खराब क्वेश्चन था. ओके ठीक है, कोई नहीं. Oh, there's a super West chat. वैभव, एक Asian बार country. हाँ, मैं check सुपर कर लो. चैट बाद में सारी लूंगा. इंटेंशनली रीडिंग साथ में एक साथ लेंगे. हाँ. यार, तो थोड़ा Neville का अकेले डिस्ट्रैक्टिंग हो pressure आ गया जाएगा ना. थोड़ा सा. अच्छा, तुम इसलिए कह रहे हो कि मैं ऐसे वाइट नॉइस के लिए करूँ गाइस? तो वाइट नॉइस के लिए हम लाइक थोड़ा कमलजीत सिंह ने हमें सुपर चैट दिया. थैंक यू सो मच कमलजीत. अपना वीडू किंग एरिक की भी एक सुपर चैट आई है. इन्होंने बताया ये सारी पिक्चरें देखो. वो मैं अभी नहीं बताना चाहता क्योंकि Can थोड़ा. you tell me? हाँ हाँ, yes Neville. One sec, sorry, I need हाँ. to enter a password. Huh. Fuck man. But is popular in a certain West Asian country due to the real life personality X. So this person is popular in another country Yeah, because of multiple reasons. but that person is Okay, so the name of the play and the name of the person is the same, and the play only has one actor playing just as a monologue. The play is तुमने वो इमेज लगाई है क्या? दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू आस्क.
जो हिंडोल कौन सी? Yeah. ग्रेट. अरे यार लैग आ रहा है. चलो लैग चला अरे जाएगा. क्या यार, कोई नहीं कोई चलो, नहीं. हाँ नो लैग I है तो know. गाइस कमेंट कर देना यार, Is थोड़ी it- स्ट्रेस खत्म हो जाता है. हाँ. Is it Nasiruddin Shah? It is Nasiruddin Shah, last 22 minutes. हमारा What a नसीरुद्दीन शाह के complicated साथ Neville, we just recorded an episode with Nasir sir like Yeah, I saw some post of yours coming soon or something like that. No, so Yeah. then this fellow also said if you follow Chalchitra. So then I was like, who the fuck has the hair apart from me to play Einstein? nice. So यार हाँ, कब आ रहा है वैभव, कुछ हम रिवील कर सकते हैं? अभी Achha, guys, हाँ. normally, no, before a quiz, I do something. Okay. So I'm going to turn off my video for 2 minutes. हाँ. Don't put the next question. ठीक है. We'll मैं have a स्टॉप शेयर conversation. कर दे, मैं स्टॉप हाँ, शेयर stop. नहीं तू चालू कर. हाँ, I'm just turning off my video. हाँ. बात करो, मेरा हम लोग आवाज चल. बात करते हैं. हिंडोल क्या चल रहा है यार, मतलब Sorry, before a quiz, like it's too much pressure. Like I don't care if it's for fun. It's just way too much pressure for me. हाँ. कर. हम ऐसे हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट नहीं करते, मतलब ऐसे बस पट्टी पे नेविल शाह लिखा हुआ रहेगा तो वो मतलब इफेक्ट आएगा. कॉन्टेक्स्ट. हाँ. वही वो है ना माइकल स्कॉट का, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, आई एम अ लिटिल स्टिशियस. या. आज सेटअप डिफरेंट है, लाल लाइटों वाला लाइक गेम चेंज हो रहा है, अपना स्वैप कर लिया आपने पूरा. और मेरी हाँ, मम्मा का नहीं, फोन आ रहा है ये कि खाना खाने आ जाओ, तो लाइक मेरे को थोड़ा. हाँ यार, मैं कैब से उतरा, भाग Look, if के you आया trust ऊपर. me that I won't Google stuff, by all means start the question. नहीं यार, वो तो आप नहीं, वो तो नहीं, ट्रस्ट तो है, बट लाइक हाँ. लोग चैट में आपकी वजह से, वो आपके फेस की बहुत वैल्यू है हाँ. सर. यस. How can you say this, Vaibhav? असली फेस तो आपका है सर. मुझे नहीं, जानना है, सर, like, ऐसा what कहाँ, सर? is there some context that all of us are missing कि ये अरे कहाँ वो से शुरू नेविल हुई? और मेरी all of इंसाइट. No, I think Vaani also knows because Vaani Vaani has has- given that laugh of क्या? Vaani has given that laugh of knowledge. You know, like when the epiphany hits you and you're like, oh fuck yeah, समझा मेरे को वो वाला. Yeah. ठीक है गाइस, जल्दी से तब तक कमेंट कर दो कि कहाँ से देख रहे हो. जो 350 लोग आए मेरे हैं. को You know, I bought into this hoax recently because I wear I wear guys, specs. finally Vaani has a voice, guys. Yeah, guys, let Vaani speak, guys. हाँ. हाँ. It's just a small rant because I did this stupid thing. So वो sunglasses get fogged up now because of the mask recently. So हिंडोल instead की of getting a बॉटल new भी pair, रेड है, सॉरी. Like everything is red. Hey, let Vaani talk, I yeah. think this mic thing is also red. Yeah. Wait, yeah. Please, So please. I got this weird thing which is anti-fog. That's it. Does it work? It does actually for 24 hours. So your What is the composition on it? Can you see? Good question. You can wear your specs, Vaani. It's okay. What is this vanity, Vaani? There's no, they haven't written the composition, or maybe I've thrown the outer outer packing. सही है. तो मैं थोड़ा Sorry, या मैं थोड़ा चैट का ले लेता हूँ. लाइक बहुत लोग लिख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं वो. चेन स्टूडियोज टोरंटो, कुशाल मुंबई, एपेक्स भोपाल, अक्षत अगरतला, देवेश मिर्जापुर, नॉट किडिंग. आगे उन्होंने लिखा है सार्थक बैंगलोर, संकेत स्पेन, विनय लैग अगेन विच इज नॉट अ सिटी और इट्स अ कंट्री, अभिषेक नवी मुंबई. It's a country where Vaibhav resides. Lagpur. एनजे दोहा से देख रहे हैं हमारे पेट्रन है. Sorry, Vaibhav lives in Lagos. Nice. Thank you. नाइस. सुपर चैट है ये दिविज की. 1 वीडियो ऑन कोक स्टूडियो सीजन 14 प्लीज. और भी सुपर चैट्स पढ़ लेते हैं. नहीं कौन मैंने देखता है कोक स्टूडियो, गाइस? मैं तो नहीं देखता यार. अरुज चल, आफ्ताब आजा. जब आएंगी तब देखूंगा. वो आने वाले हैं शायद कोक स्टूडियो में. अरुज आफ्ताब इज कमिंग इन वन ऑफ द कोक स्टूडियो. तब बताना गाइस जब आए. Strings is not producing anymore ना now. अरे वैभव की मम्मी चिल्ला रही है, चलना. हाँ नहीं, मम्मी तो मेरी भी चिल्ला रही है, नहीं but चला आराम से यार. लाइक
That reminds me, we never discussed that idea that we had. we will सब करेंगे। और नेविल आराम से रिलैक्स हो जाओ, हमें कहीं नहीं जाना, खाना नहीं खाएंगे आज, थोड़े पतले हो जाएंगे। अरे मेरे को उसका टेंशन है, मेरे को मेरा तो पैर हिलने लगा है, क्विज का नाम सुनते ही मेरा फट जाता है यार। ठीक है चलो। चलो ठीक है, तो +20 पे है नेविल। अच्छा हम 10 पॉइंट दे रहे हैं हर I'll क्वेश्चन के take लिए। this question. वानी अरे मैं लिख रहा हूँ स्कोर भाई, तू +20 बोलता है, मैं लिख देता हूँ, मेरे को आदत है। So बोल +100 to Neville. Next question coming up. +100, ए तू डिसाइड कर भाई कितना नहीं है नहीं पर क्वेश्चन। +10 20, +10 कर लो। +10 +10 अच्छा ठीक है। ठीक है, 10 ही कर लेते, चलो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। अरे चलना, सॉरी बहुत टाइम हो गया। हाँ, so this is about a competition format जो US में बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड भी कंडक्ट होता है बट US में काफी पॉपुलर है। The earliest roots of this competition format go back to books written by Noah Webster that became a part of elementary schools in the US. The annual version of this event, which got hooked on to the most popular version of this competition, and it led to the creation of a viral trend. Oh, Which fuck. competition are we talking Oh, you about? want the competition? Yeah, I just want the competition. I don't want the trend. I'm going to try. Okay, is it हाँ. spelling bee? It is spelling bee. ओहो +20. बहुत सही। Are we doing +10 or +20? या नाइस यार। हाँ, so spelling bee है, and it obviously inspired Wordle. And Palaksha is the person जिनके लिए Wordle बनाया गया था by Josh Wordle. वाओ वेरी नाइस। +10 to Neville for spelling bee. बहुत सही जा रहे हैं नेविल, बहुत सही। 2-1-2। हाँ, चलो next question coming up. Baimurad Allaberiev, also known as Tajik X is some term, is a vocalist and musician from Tajikistan of Uzbek ethnic origin. He was discovered while working in a warehouse as the result of a colleague videoing him performing a cover of a song in the 80s with a cell phone and posting it on the internet. The term X comes from the song itself, which was the stage name of the film's lead character. The film was in the news recently due to one of its crew members. Which film is this, or what term is X? So there is a song in this film, 80s की फिल्म है, जहाँ पे जो कैरेक्टर है उससे उनको बुलाया जाता है. And obviously this has to be something related to music because a character has a stage name, right? I know the video, etc. that you're talking about. I'm just trying to think of that. Yeah. So, and by recent news due to one of its crew members. Now, why was it in the news? I'm not telling you, but कुछ तो था. यार टपक ही गया होगा ना यार. '80s की हिंदी फिल्म है, आपको बताना है क्या सीन है. चैट में एक बार देख लेते हैं. अभी भी लोग लागोस लिख रहे हैं. अच्छा, is this something to do with Bappi Da? Okay, and what is the film? Which song is this? You can guess either or. But like, yeah, if you know the film, then you know the song. Yeah, so I'm saying I am a disco dance. No. Auntie, I'll give it to you. The film is indeed Disco Dancer, and the term is Jimmy. Jimmy. Acha. Yes. So that's the song that he performed a cover to, and you know what I first got confused with? The guy who sang that cat video with that Norwegian song. That one, which is that original Norwegian song. I got confused with that. Okay, chalo. So yeah. Scores हो जाए एक बार. Scores 30. Neville is on 30 and Vaibhav is on Lagos. So, next question coming up. यार ऐसे आप लोग भी थोड़ा करो ना यार आंसर, मतलब हाँ मेरे को थोड़ा डिनर करने जाना है, करते हैं अभी. तो कर ले 5 क्वेश्चंस कर ले, फिर मैं एडिट कर लेता हूँ वापस. नहीं यार चलने दो यार, लाइक मेरी वजह से थोड़ी शो रुकेगा. चलने दो, बिल्कुल चलने दो. नहीं क्योंकि अभी मुझे लग रहा है नहीं मुझे लग रहा है नेविल का तू खाना लेके आना है. हाँ मैं वही कह रहा था. चलो मैं आया लेके आना खाना. अभी लाइसेंस मिल गया. चलो नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है मैं नेविल का वाइवा ले रहा हूँ, मुझे
बहुत अजीब लग रहा है. So ठीक है. वानी, तो हम रुकते हैं. you'll have to. Stop share अरे करने नहीं को. नहीं, तो हाँ. अच्छा, अभी हम लोग अरे किसके नहीं लिए नहीं, रुके? that's the whole idea. हिंडोल, अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? मेरे अच्छा मेरी वजह से अच्छा शो अच्छा नहीं ठीक रुकेगा, आप कंटिन्यू करो. या अच्छा अच्छा ठीक है. चलो, शो मस्ट गो ऑन एज पपीदा सेड. तो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. Wasn't that Freddie Mercury? पपीदा नहीं बोला था. ठीक है. Nice. हाँ. सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये कुछ सिटीज के नाम है और उनके साथ कलर्स दिए हुए हैं. सो जैसे मुंबई, दिल्ली आर डार्क ब्लू. गुवाहाटी एंड भुवनेश्वर आर ब्राउन. पांजी, आगरा एंड वडोदरा आर लाइट ब्लू. Then Bengaluru, Chennai and Kolkata are green. So you just have to tell me where would you find this color association? I just got a YouTube notification saying you've been watching this for 1 hour 15 minutes. Time to take a break. Yeah. Okay. So hint क्या दूं? So there are global variants of this as well. कि मतलब there are multiple places in the world which have similar associations, and I would say that dark blue is the most expensive in this category. Vaani. Pikachu. Yes, Vaani. Are we competing like that? हाँ चलो कर लेते हैं. Or wait, or do you want to give Neville some time? Yeah. हाँ. हम काफी No, lenient because हैं वैसे. Vaani, go for it if you know the हाँ. answer, because I will I never answer until I'm sure. अच्छा Like अच्छा. I will never. Can This I is give why the hint? Pikachu not. हाँ ठीक है. चलो. It's also very limited now because it depends on the price. He said dark blue is the most expensive Yeah. in this list. Dark blue is the most expensive, and I Where think do you have places and also prices? yeah, and brown is No, the I cheapest. thought real estate, but that makes no sense. Why would Bengaluru, Chennai be green? Like, there's no reason for it to be green, because if those are the most expensive in नहीं आप Kolkata, Chennai. वो उसमें मत सोचो. आप ये सोचो कि कहाँ ऐसा होता है जहाँ colors and places are associated, and money also plays an important part. Dude, there's several things. No, मैं पहले IPL सोचा था, but obviously it's not. But I'm just trying to think of like. And this is the Indian version of this. मतलब in the world there are different versions, and वहाँ अलग-अलग color association होता है. तो वैसा है. क्या है? को भी हो रहा है क्या? The colors of dark blue. Also look at the groupings. It's either 3 or 2. Yeah. Is this because you have the cheat sheet in front of you, Vaani, or did you figure this out? I'm genuinely asking. I figured this one out the moment he said the prices. Because Prices is a good hint. And Yeah, so I was thinking real estate, but like even if it's real estate, then why would say Chennai, Bangalore, and Kolkata be green? Because that makes no sense, right? Like I would assume that prices in Bhubaneswar and Indore or Nagpur would be less than Bangalore for sure. But it also depends on the amount of rent you would get. Like if you own a property and you are collecting rent, then What the fuck? Then is it monopoly? Yes, it is monopoly. Why would you say rent collecting? No. Yeah. So plus 10 to Neville again. This is Really, I should India. get 5 for this because you really know this. Yeah, I've come to your place. I've spoon fed you the answer. Yeah, exactly. Yeah, but yeah, this is the Monopoly India board. तो इसमें आप देख सकते हैं Is that India? Yeah, this is the Indian edition. तो मुंबई and Delhi are dark blue. तो वो एकदम end में आती हैं properties. So Nice. yeah. So plus 10 to Neville plus 40 पे अभी. And next question. I think I should take 5 for this, honestly. चलो ठीक है. On I'll give you 6 points for this because 1 mark for honesty. ठीक है. Nice. Next question coming up.
The fact that Mehboob Khan's Mother India lost out the Oscar to Fellini's Knights of Kabiria by a margin of one vote in the third poll is widely known. However, the lesser known fact is that when the movie was being screened for the Academy judges, the initial part featuring the production house details was purposefully edited out to prevent any fuss. Why was this done? So there was something in the production house's details that you see in the beginning of the film, of this film's production house, जिस वजह से अमेरिका में उसको edit out करना पड़ा था because of things that were happening in America at that time. And So what the- year was? yeah, this is the 50s. 1957 is Mother India, so this is the 50s when this was happening. And Mother India is also about farmers, like the farming community in general, though. That is also another hint. Hello, here from my mom's account, just getting dinner and coming back. Vaibhav ने लिखा है chat में. Yeah. Oh, nice. और क्या बोल सकते हैं? So this is so there was, okay, I'll give you a lesson to this thing. So there was some symbol in the production house's logo which would have caused an issue in America in the 50s. And this is a common symbol, like it wasn't very particular to the production house. And काफी worldwide post World War II ये symbol काफी popular हुआ था until like 1980s, late 1980s. तो आपको बताना है ये क्या है. So after late 1980s, it faded out. It didn't Yeah, have its मतलब popularity. yeah, it is still popular, but like not as popular as it used to be. So 50s would be, I don't know, at the height of the Cold War. So I mean, start of the Cold War. Huh. Bay of Pigs was much later. It was in the 60s. So I'm just trying to think of. Okay. Was it the poster of Nargis Dutt and Mother India was? That's the poster. I'm just asking, जो भी Mother India का production house था, उनका एक logo था, which was a very. Was it a sickle and a hammer, which was the communist symbol, or like the flag of the USSR, and therefore? Yes. Plus 10 to Neville. Okay. Hammer and sickle is what I was looking for. So this was the logo of Mehboob Productions, which was a hammer and sickle. And obviously this had to be edited out in the US because of McCarthyism and a lot of things. So plus 10 to Neville for hammer and sickle. Next question coming up. इसमें दो part है. So if you answer the first part, then you can get bonus points also. As part of an annual rehearsal for something, British newscasters are made to cover the fictional death of Mrs. X with the newsreel telling that the cause of death is choking on a fishbone, as something similar had happened to the mother of a certain person regarding whom the rehearsal is conducted. Possibly a reference to a 60s song used in a film about a young college student meeting a much older woman. What is X? Like, what is the surname X? Bonus points. For whom is the rehearsal conducted? तो bonus points वाला easy question है, तो वो मैंने bonus में रखा है. You have to first tell me the surname of this person. The surname is also the name of a 60s song. Mrs. Dash. I'm assuming the rehearsal is for the Queen. That's the bonus thing. We'll come. So I'm taking my +1. I was going to give you more points for bonus, but आपने भी decide कर लिया. कितना दे रहा है बोल? अभी आपने कर लिया 1 तो लॉक कर. What's up? अरे भाई उतने ही मिल. Who is winning? Neville अभी कितना? Vaani is winning.
क्या है 5-on-5 है क्या है उसका क्या स्ट्रिक चल रही है? हाँ 6 अभी तो 5.5/6 चल रहा है। ओ तो 55 मिले इसका अभी तक। आधा तो नेविल ने अपने इससे 5 पॉइंट कम करा है, तो मैंने उनको फिर 6 पॉइंट दिए क्योंकि 1 मार्क फॉर ऑनेस्टी। नाइस। तो हाँ, तो अभी करंटली नेविल कितने पे है? 46 पे है नेविल। 47 पे है क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में उनको 1 पॉइंट मिला है। गॉट इट तो गॉट ही इट। इज There's आयुष दुबे Mrs. पूछ रहे हैं, Dad. भाई थोड़ा थोड़ा रुको, हम आपको आंसर रिवील करेंगे थोड़ी देर में, तो आप टेंशन। आयुष कह रहे हैं दैट्स अ ग्लोरियस डेथ। नहीं, मरे मरे नहीं थे वो, बट ये चीज हुई थी उनके साथ, See, ऐसा it है। can't be the queen because I'll tell you why. ओके A, you want a ओके। surname has हाँ, fallen, दैट्स right? द ओवरऑल ऑपरेशन, मतलब एवरीथिंग, दिस इज वन पर्टिकुलर दिस थिंग फॉर न्यूज़कास्टर्स कि न्यूज़कास्टर्स अनाउंस दैट मिसेस एक्स हैज पास्ड अवे, so this is something that they do. So you just have to tell me what is Mrs. X, which is also the name of a song. The song is also called Mrs. X, 60s song. And then you have to tell me for whom is this rehearsal conducted. So 60s song used in a film about a young college student meeting a much older woman. And the older woman is Mrs. X. So Film. is it Simon and Garfunkel's Mrs. Robinson, like Goodbye to You, Mrs. Robinson, used in The Graduate? Huh. Now, what is your final answer and for whom is the rehearsal conducted? Now I'm not sure if it's for the fucking Queen, dude. Okay, I'm still going to go with Queen. And Huh. because you said British newscasters are made to cover the fictional death of Mrs. Robinson. So yeah, Mrs. Robinson and the Queen, I guess. Or the royalty, whoever is the person at the monarch, I guess. Cool. So you get 11 points for this question. It is Mrs. Robinson and Queen Elizabeth II. तो उनका कोड नेम इस रिहर्सल इस चीज के लिए मिसेस रॉबिन्सन रखा गया, and the reason why this particular reason has been chosen as the cause of death is because this happened to the queen mother in the 80s. She didn't die of it, but this thing happened. So British people being British people, they just chose this. So 11 points to Neville. Neville is at That was 57 very points. confusing sort of question because, Yeah. like, anyway, okay. So 57 points पे है Neville. 7th question coming up. In Hindu mythology, No Apasmar chance, or dude. Bhayalaka is a dwarf who represents ignorance. He is said to have been subdued forever under the right foot of a deity in order to maintain the balance of knowledge in the world. Apasmar is also a neurological disorder described in Ayurveda, equivalent to modern day definition of epilepsy. Generally depicted in art and sculpture with his hands in Anjali Mudra, where are you most likely to see this dwarf? So I'll give you one more hint. So this is obviously some very famous idol and pose which is seen in Indian mythology. एक stationery brand है, उसका logo भी है ये. So that's as simple as I can make it for you. Indian stationery brand है. I'm sure all of us here No, and I've in the understood chat that. I have know used the it. answer now because you Huh. said it. Huh. And it's also decipherable there. But I'm just still generally depicted. The dwarf is the statue. No, the dwarf is a part of the statue. Like the statue is of a deity and उस deity के right foot के नीचे ये dwarf पाया जाता है, क्रश क्या किया मैंने हुआ. वो स्टेशनरी ब्रांड का सबसे फेमस ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में पकड़ा है? Decline to comment. Because I was thinking, is it like I can't be Apsara? Apsara is not anything. So, Apsara has extra marks for good editing. is it Nataraj? Therefore, Yes, Nataraj it is. pencils. It is Nataraj plus 10 to Neville. काफी स्लमडॉग मिलियनेयर वाला प्लॉट चल रहा है ना. सारे Slumdog आंसर आते हैं. Millionaire designed for For Neville. So yeah. Yeah. So this is the Nataraj idol and उनके पैर के नीचे अपस्मार dwarf को पाया जाता है. So plus 10 to Neville for this thing, Nataraj.
Next question coming up, eighth question हो रहा है, and yeah. Bond certificates originally used to come in a sheet format with detachable portions which could be torn off and presented to collect interest. Having its roots in French for cutting off, what name was given to these detachable portions that has now entered business Coupons. parlance? Answered. This is indeed coupons. Coupon from Coop. बहुत सही Last time यार. to Neville. हाँ, नहल कैसा ये लग तो रहा है? 2 काफी. मिनट बताओ यार. क्या 8 on 8 हाँ, चल रहा है यार अभी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 4 पॉइंट कटे. चलो. Second last question coming. Ninth तुम्हारा question ऑडियो coming up. एकदम से इतना अच्छा कैसे हो गया? अभी तक क्या कर रहे थे? हिंडोल? Yeah. अभी तक माइक So, था. सुनने वाले की नजर में होना चाहिए, बाकी तो ठीक है. हाँ. चलो. Ninth question coming up. According to legends from ancient Egypt, Greece, and China, which sport was played between sun and moon for supremacy on the earth over light and darkness? The sport was a part of the Summer Olympics from the year 1900 to 1920, but got removed from the Olympic program along with 33 other sports because the IOC decided there were too many sports and too many participants compete. Pop culture. तो ये कौन सा है sport? आपको बताना होगा. इसका आंसर मुझे So भी it नहीं does पता. not हाँ, exist. It does not exist in the Olympics anymore. not anymore. एक सेकंड. ये वाला एकलव्य ने बनाया था, जो हमारी क्विजिंग टीम का पार्ट है, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता. 2 मिनट दीजिए, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ. Shall I WhatsApp it to you? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड. हाँ ठीक है, ओके, cool. बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है. और या पॉप कल्चर इज बिगिंड. थिंक ऑफ things from pop culture in the last 1 year which involved No way. I sports. won't fucking know any of that. I have a feeling you would. वैसा है थोड़ा. एंड हाँ, मतलब कुछ फाइट हो रही है. देयर आर टू ग्रुप्स, sun and moon for supremacy, and this is a sport that is played like worldwide. The concept remains the same. And what else can I say which is not obvious? मेरा स्पोर्ट्स डे में फेवरेट स्पोर्ट था ये. मुझे बहुत मजा आता था. बस यही याद आ रहा है. एक सेकंड, चैट में देखते हैं किसी ने आंसर किया क्या. मैं वो फीलिंग कर दिया होगा. नहीं, चेस नहीं, लूडो नहीं, रॉक पेपर सीजर नहीं, छुपन छुपाई नहीं. सॉरी. हाँ नहीं है, छुपन छुपाई ओलंपिक्स में हो तो मतलब क्या ही, क्या सही रहेगा. एक और टकीशीज कासल जैसा. एक और एनालिसिस जो है आज का, इतना कुछ वो डीप नहीं है. मतलब पिकाचू हटा दो तो नेविल मतलब बिल्कुल ओपी है यार. मतलब एक भी गलत आंसर नहीं. That means I'm thinking this 33 other sports is irrelevant, right? Irrelevant, completely irrelevant. Nice. लास्ट क्वेश्चन में पिकाचू डाल देंगे अंडा. पिकाचू तो मेरा भाई फॉर्मेट में तो अब तक था ही. आप लोगों ने मेरा 20 पॉइंट का 10 कराया है. And the sport that came into the limelight because of pop culture, has that made it back into the Olympics or No. a professional version? No. Is there a professional, like, is it in? I'm not sure if there's a professional version of it or not, but it's not a mainstream sport. Like, it's something that all of us have played in school or as kids, but it's not a sport. वैसे it's a game, but उस कैटेगरी में आता है जो स्पोर्ट्स डे पे होता है. नहीं, खो खो नहीं है, लंगड़ी नहीं है. रोहन अय्यर कह रहे नींबू रेस. नहीं.
हाँ, but the genre of sports जो भी अभी तक लोगों ने guess किया है, that is correct. जो नींबू रेस कह लो, खो-खो कह लो. I used to be कह रहे beat boxing. Beat boxing is not the sport and we're looking for. मैं यूएसबी बन गया यार. 1 second. चलने देते हैं अपना क्या. मैं डिनर कर लूंगा इस बहाने. कैमो वाले स्ट्रीम देख रहे होंगे तो बोलेंगे यार क्या है यार, इनसे Egypt- प्रोडक्ट वापस ले लेते हैं. Egypt, Greece, China. हाँ. And India also. The sport is very popular in India also. Oh fuck me! I have to redo maths. And the thing that this came into the limelight from, उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स थे ऐसे, मतलब बचपन वाले स्पोर्ट्स थे, जैसे आइस पाइस था, फिर लंगड़ी का एक वर्जन भी था. एक This sport was there. आइस पाइस की स्पेलिंग क्या होती है? मेरे को कोई बताएगा? कोई वानी हिंडोल? आई थिंक मेरे यार मैं तो ICE मानता था. I Spice, what was it? It's I Spy. That's what. I Spy. ये हाँ, फिर मुझे पता चला कि वो आई स्पाई ये वो थम्स अप वाला है ना, जब मेरे को पता था थम्स अप में बी नहीं होता. Yeah. How old were you? I was today years old. Yeah. मोस्ट पेशेंट चलचित्र क्विज एवर हो गया आज तो. बैठे हैं सब, खाना वाना खा रहे हैं आराम से, चिल. भूख लग रही है. कल फिर मैं गिव अप नहीं हो रहा है. हाँ नहीं आप give up मत कर. ऐसे नहीं होता. जिताना है यार, 10 on 10 करना है यार. हाँ. 10 on 10 तो already नहीं हो रहा है ना भाई. The name is a 3-word phrase. यार ये तो बहुत इजी दे दिया यार हिंडोल. मतलब अब मैं हैंगमैन लेवल पे जा रहा हूँ. अभी मैं वर्डल खेल रहा हूँ नेविल के साथ. I don't know. Fuck. Okay, is it hide and seek? No, not hide and seek. Okay, then I really don't know, Okay. because I was like sun, Instrument, moon, that's therefore you. hide, seek, Fair. teams. Fuck, I don't know. Chor police, bench. Yeah. Raja Mantri, Chor Sipai nahi. So yeah, the answer was tug of war. Oh, Maki Chor Squid Game. So yeah, Squid Game is the reason why tug of war has come back. Hey, I think hide and seek was a cool, educated guess. Okay. I said I was talking to Vaibhav ना कि छुपन छुपाई अगर Olympics में होता तो Who क्या the fuck होता. listens to what you're saying when you're saying answers? I'm Fair. confused. मेरी माँ भी मुझे ये कहती. But ठीक है, cool. तो yeah, tug of war was the answer. This was the second last question. And हाँ, अभी last question पे आ गए. And हाँ. तो कोरिया ही मेरा मौत बना. question है, last question. Come on, of come on. today's, चलो हाँ, खाना खाना है फिर चलो सबको. सबको खाना है. So और वानी को कुछ गेम खेलना है. Some concepts he wants to talk about. हाँ. ठीक है. हाँ अरे हाँ, ओहो वो भी करेंगे. हाँ now I remember. हाँ. Okay. 10th and last question coming up. Okay, this is about some character called X. The character of X first appeared in 1996 and gets its name from Japanese onomatopoeia, combining the Japanese words for a sparkling sound and the sound of a sound that a mouse makes. However, the design of X, especially its cheeks, was actually based on squirrels. Developer Junichi Masuda. Fuck you. You're not going to make me say this word in this quiz. I will not say this word in this quiz. Fuck you. I'm losing these points. I'm not giving this word in this quiz. I'm not going to say it. क्या है? Take away my point. हिंडोल ऐसा क्या, ये अप्रूव नहीं किया, ये सब क्या डल रहा है? I am not saying this word in this quiz. I will maintain the sanctity of my score. I will walk away with an acceptable 87. But I will not give the ये answer क्या to this चल रहा question. है? I haven't seen it. देख लो यार नेविल, मतलब क्या ही बोलूं अब. आपको मैं नहीं आंसर तो बोलूंगा पता आंसर. है, आपको आंसर तो पता है Yes. ना. Yes. But I'm not going to take my 10 points. I am happy with a meager 86. And I will stay with that. हाँ, मैं so बहुत I'm fine. concerned हूँ हिंडोल, No, तुमने क्या 76. किया है? 76. 77. हाँ, हाँ, 77, Neville, sorry. हाँ, so I'll I take my won't give you, 77 I won't give you the points. Just say the word. No. That is the principle of it.
That is the principle of it. I will not say the word. You have to say the word. I'm not. ये क्या हो गया यार? This is principle. Vaibhav 10 says बार know the बोल answer? चुका हूँ मैं. हाँ हाँ? Do you know the answer, हाँ Vaibhav? मैं yeah, of चैट course पढ़ I ली. know the वानी तो answer. खाना खा रही, मैं भी ले आता हूँ. Oh, I thought you were asking Neville. Oh, Vaibhav. Yeah. काफी एंटी क्लाइमैटिक, बट ठीक है, चलो इसकी क्लिप बन जाएगी. सो द आंसर वाज ऑफ कोर्स Pikachu, and this is how the word Pikachu came into existence. And Very nice. वही अभी वैभव लास्ट क्वेश्चन में कह रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में पिकाचू डाल दो. मैंने इसीलिए 2 मिनट रुका, मैंने क्वेश्चन के पहले पूछा आपको काफी मेटा, कि 5 काफी क्वेश्चन मेटा. कर रहे हैं या 10 क्वेश्चन कर रहे हैं. काफी मेटा. So, yeah. बहुत सही. आई थिंक आगे कोई एंड स्लाइड है? स्टॉप स्क्रीन शेयर कर दे. And अच्छा सॉरी, ऑडियंस क्वेश्चन था. अरे ठीक है, पूछ चलो लो कर यार, ही ऑडियंस लेते क्वेश्चन पूछो. इतने देर से अभी हाँ. 330 लोग बैठे, हाँ. 12 बज गए. हाँ चलो गाइस, जो भी है आ जाओ फटाफट. As a part of whose obituary did the Economist write the below in 2012? He was born a Christian, became an atheist, ate beef and liked a drink, but not milk. In fact, he actively disliked it. नेविल आपको आता है? So, सोच रहा हूँ. मैं जब तक श्योर नहीं होता आंसर का ना, मैं देता ही नहीं है. ऐसे ही मिलते हैं अब तो गाइस आंसर- 77 पॉइंट्स. यही ट्रिक्स है. नेविल आप तो आंसर श्योर होते हो तब भी नहीं बोलते. Well played. वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड. लोग कह रहे सख्ती, नेविल ने सख्ती रखी. चलो. अभी पिछला क्वेश्चन चल रहा है, किसी ने आंसर में लिखा है जीसस. There is. ओके ठीक है, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. अच्छा इतना पुराना चल रहा है क्या? हाँ, थोड़ा डिलेड चल रहा है. लो स्टीव जॉब्स इज नॉट द आंसर. और क्या हो रहा है लाइफ में? सब बढ़िया. हाँ बस बढ़िया. फाइनल. But Neville did cross the 70th mark, हाँ. that 70 mark. हाँ चलो, ये तो बढ़िया हो गया. इसका बताओ यार आंसर. नहीं रुकते ना थोड़ी देर चैट में. इतने सारे लोग हैं, 300 लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही लेगा. कोई तो अगला हिंडोल होगा. मुझे बहुत उम्मीद होती है चैट से. नहीं अभी खेल रहे हैं चैट वाले. अच्छा ठीक है, आगे. NJ has answered and Yashi Chauhan has answered. This is Varghese Kurian. Congratulations NJ and Yashi. NJ हमारे पेट्रन भी हैं. थैंक यू सो मच. Yes. मैंने अमूल गर्ल लिखा. Yeah. Almost there. तो I hope इसके आगे कोई questions हाँ, अगली slide दिखाना. नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ, स्कोर स्लाइड था. चलो तो गाइस share कर गाइस देते हैं. दिस वाज अमेजिंग यार. एक सेकंड ना. हाँ बहुत बढ़िया था यार ये. थैंक यू सो मच नेवल फॉर डूइंग दिस. मजा आया आपको? थोड़ा वार्निंग दे दिया कर ताकि मैं बैक हो सकूं. ये 5 का ही बात हुई थी यार हमारी. ये तो हमने फिर सोचा टाइम. No, I just needed the 2 minutes. हाँ वो कर तो लिया था हमने. हाँ. What was I saying? Yeah, Vaani, what was this concept or idea you wanted to discuss? Tell. हाँ Vaibhav, I don't even हाँ शार्क टैंक पिच हो गई वाली. नहीं हम ऐसे सोच रहे थे बट लाइक अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया. ऐसे कुछ ना. We never went through because टीम में किसी ने रिप्लाई नहीं किया. हाँ हमने कोर टीम में डाला था, किसी का रिप्लाई नहीं आया. कि जैसे मैंने और वानी ने एक ऐसी चीज़ की थी. सो एक विस्पर टॉक्स करके किया है, क्योंकि हम जो भी रेकरिंग गेस्ट ला रहे हैं, जैसे आप आए, ये जो भी द पीपल वी रियली लाइक ऑन द चैनल हु हैव सपोर्टेड अस, तो उनके साथ आके ऐसे मतलब थोड़ा बकचोदी के लिए ऐसे विस्पर्स में बात करेंगे. और मतलब पूरा के पूरे स्ट्रीम में विस्पर होगा. एंड द सीरीज विल बी कॉल्ड माई मॉम इज अस्लीप. ठीक है. एंड यू डोंट गेट टू टॉक इन लाइक 1 डेसिबल लेवल है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते. सो वानी थोड़ा एक डेमो देता है. ठीक है. ये हमारी शार्क टैंक पे है गाइस. ये काफी ASMR टाइप वाइब बना है. हाँ एग्जैक्टली. तो वानी आप स्टार्ट करो तभी वर्क Oh, करेगा. this happened because when I started talking about like right at the top of the stream and I was whispering to you guys. वानी लेट्स ऐसे माइक को भी पकड़ना होगा इसको सबको अपने, जैसे हिंडोल ने भी पकड़ा. Mine is fairly phallic, so I Yeah. don't know if I should be. What's up? It's a whisper. Why are you still talking loudly? I don't understand. I'm just whispering.
You need to speak. No, no. Yeah. I can't stop laughing. I think we need to stay free. Whisper. Why are you screaming? Whisper. This Yeah. is what a whisper is. You are exhaling so much breath. That's not a whisper. You're still screaming. Expulsion of breath has to reduce. इसमें ये देख लो जब हम एक्साइटेड होंगे टूर इंडिया जीत गई आज तब कितना जा सकते हैं. At which Vaani answer, Vaani go, then I'll talk. It's so difficult to interrupt people when you speak like this. You can raise your hand, but what I was also saying was, hey, Hindol, chuk na 2 minutes. I'm saying, Vaibhav, the whole point is, if someone is trying to gesticulate vociferously and wants to say something, oh God, India cheat gaenge, the gesticulation of the body is going to be loud. Exactly. But the whisper still has to stay. Because the mom is asleep. Yeah. But you're still screaming. Don't scream. Oh, अच्छा तो gestures भी loud नहीं हो सकते. Hindol is out. Hindol is out long ago. When he gave me that last question. You need to stay free to whisper. Sorry. Hindol has become a robot. Why? Hindol, why are you not whispering? Why is there still a raspiness to your voice? Okay. So Vaani, this मैं कभी लड़की से बात नहीं करी रात को ऐसे फोन पे. क्या अच्छूते आदमी है यार. निकाल लेता वहाँ से. हम सब एक्सपर्ट हैं इसमें. क्या? Yeah. So Always stuck. yeah. So last ये segment होगा हमारा ये VMs Square streams का और सब एक whisper में recommendation देंगे. ठीक है. One recommendation by everyone, and this is going to be a last segment. Moving onwards. So Hindol, we'll start with you. Give us one whisper recommendation. एंड तो क्या? नहीं अभी तो. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है. रुको. Okay, Vaani, you give a recommendation. That सबसे पहले has to give the recommendation. Yeah. अच्छा इसे. Yeah. I would like to recommend. So Hindol is already out. And I would like to recommend gulab jamun. अच्छा. It's available. Sorry, left. Okay, Vaani, recommendation. I'm trying to find that it's an Instagram handle and it's about food. I'm trying to find the name of it because I'm Gulab jamun. Okay. yeah. कितना स्लो कर रहे हो बताओ. What's the name? Give me a second, you please. It's rooted in spice. It's actually good. कुछ समझ नहीं आया. You'll have to spell every letter. She said rooted in spice. How will you not understand what she said? Ragos right now. I am living in Ragos. मैं सबको 10 frame per second पे देख रहा हूँ. It's called rooted in spice. You shouting? तेरी मम्मी जान जाएगी. Vaani, careful. वैभव क्या कर रहा है यार? ठीक है. Last time What's your recommendation? I'm still not understand what is in spice. Root is in spice. Rooted. Rooted in spice. Got it. Okay. Yeah. My recommendation is a documentary I recommended to Neville on a call few days back. It's called Torn Torn. It's a documentary about mountain climbing, available on Hotstar. Please go and watch it. Okay, my recommendation again. That's not the recommendation he gave me. He gave me a recommendation called Rescue. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Yes. Vaibhav doesn't know what he's recommending. ये तो agency है. Rescue I've already recommended on the channel, so I got confused. Neville, the final recommendation for the day. It has to be something that we haven't spoken Yeah. about. Right? Whisper it. ये Rain down. What are you doing? One sec, I'll tell you a recommendation. Also, I want to see how Neville will ask the audience to subscribe or like the stream in this voice. How he'll scold them. Vaibhav, this is very easy to do. All 4 of us have a hotness quotient that has gone up just because we're whispering. So there is almost a sense of
let us try to get people through this ASMR nest that we created. Yes. To get them to whisper, right? Like that's really what I'm saying. Yeah, but अब डांटो ना, कितने लाइक हो गए अभी, लाइक कितने हो गए वानी Hindol? How many likes have we had? 552. Beyond likes. Neville, in your style, ask them to get us to 600. Also 552 likes है. तो हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा नंबर पहले एम करते हैं. मैं बोल रहा हूँ 575 लाइक्स लेके आइए. अगर हो सकता है तो 5 because it is whisper. नहीं मैं बोल रहा हूँ. Yes, I mean apart from Ali Wong special, I'm still trying to think of something else to recommend. Have you seen the newer season Sari special? No, I have not. It's nice. It's really nice. I saw it. I have not seen it. I can shit. All of my decent recommendations I gave out here. Now what to do? What's the best recipe you found in the recent days? ऐसे मत बोल यार, रोते खड़े हो जाते हैं यार. I found a fairly delicious sandwich to make, and it's extremely simple. It's just bread, olive oil, salt, pepper. So it has the ingredients of a caprese, but it has fewer things and a little less complicated. Okay, so like a caprese would just be, like a lettuce and stuff like that, right? But if you took bread, olive oil, salt, pepper, put bocconcini, right, and cherry tomatoes, that with a little bit of salt, pepper, chumma sandwich. So, guys, recommendations. चलो good night. चलो, तो अब बस जाते जाते प्लीज 575 लाइक हो गए क्या गाइस? It's 65. ओके. यार 10 और लाइक यार. अपने मम्मी के फोन से कर लो यार, पापा के फोन से कर लो. क्या कर रहे हैं? एक काम करते, रुको गाइस. अवनी तू बोल दे यार, हम लोग सब कब से बोल ही रहे हैं. तू बोल दे, 10 और लाइक दे दो प्लीज. ये बोलो. Oh, yeah, guys, do like the stream. 10 more likes, and you won't have to bear with us. हो गया 10 लाइक. चलो. बिग अप भी हो जाएगा. Great. Can we return back to normal voice now? Vinay is saying speak tangentially into the mic. Vinay is saying speak tangentially into the mic so that we don't hear your breath. Tangential कौन सा हुआ ऐसे? I think they're talking to you because you're still into the microphone like that. Oh. So if you're just whispering, whisper. No, how does it matter? Got it. Vaani has become a USB cable again. मजा आ रहा है. यार हिंडोल से पूरा क्विज ऐसे करा लेते, बहुत मजा आता था. Yeah. Okay, there is a super chat. ये बहुत unclear है. While whispering, the wind makes the words unclear. That's the point. Let it be vague. It's not vague, Vaibhav. It's your idea to do this whisper thing along with Vaani. How can you not get the whisper right? अरे अभी that permutation combination नहीं किया यार. Secret. But on that note, we'll end the stream. Thank you so much, everyone, for हो joining. गया ना 575. 570. We'll get the 5 तो पाँच कर और तो यार 5 लाइक और यार. Hindol के बारे में बोल ही नहीं. ऐसे खास whisper करके. Don't just cough loud. Whiteboard आज भूल गया है. The one on which he writes. Please like, share, subscribe. Yeah, Nikhil has commented. Wish all the Indians talk like this, and there will be no fights. ऐसा तो नहीं होगा यार. Except I don't think he was talking about you. He was talking about Hindol, Vaani and I. He said all Indians. Wish all Indians talk like this, then there will be no. But this was not like Vaibhav. अरे ठीक है, you win.
इसी बात पे पिकाचू बोल दो। ये हूँ मैं नहीं, ऐसी आवाज में बोल दो प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं। बोलो ना। क्या? मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा। The last word you should say is पिकाचू प्लीज। भी वैसा साउंड कर रहे amandanshadi.com शार्क टैंक इंडिया का। ये तो दोगलापन है। हो गया होगा ना 5 लाइक। 579 likes. Great. Thank you so much, Neville, for joining. वापस मिलते हैं। You're welcome, sir. Thank you, Vaibhav. Subscribe करो। अगर तू मेरे को बताएगा when you want to call me next, मैं अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दूँ। Done. अगला बुलाएंगे आपको। अभी क्या है? मार्च में करते हैं। Okay. Done. Bye. चलो subscribe guys, everyone. I'll end the stream now. Bye.